रना रना रनु रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हाउ गाइस डूइंग? व्हाट्स अप? गुड इवनिंग. सी आई एम रेगुलर गाइस. एवरी टाइम आई प्रॉमिस आई कम ऑनलाइन. कल बताया था मैं आएगा, आज देखो कैसा आया. हाउ रेगुलर आई एम गाइस. कैसे हो आप लोग? व्हाट्स अप? हाउ आर थिंग्स विद यू ऑल? How are things with y'all? Good. क्या चल रहा है? संडे दिन हो फक देयर वर नो लाइट्स गाइस. लाइट्स आज हमारा मेंटेनेंस था साउथ गोवा का, सो लाइट्स केम एट 3:30 4 o'clock, इसलिए मैं थोड़ा लेट हुआ. मैं सो गया इन्वर्टर पे, पूरा फैन डाल के फुल ब्लास्ट पे सो गया. मैं बोला कुछ नहीं कर सकते, इट्स अ डेड लाइफ. देन आई हैड सम 3:30 आई हैड सम हाफ एन आवर अनदर स्लीप, गॉट अप एट 4 o'clock. लंच वंच कुछ नहीं किया है, अभी करेगा. आई वांट टू ईट समथिंग. आई एम ईटिंग. आई ऑर्डर्ड समथिंग. आई वाज लाइक बहुत टेस्ट आ रहा था. आई वांटेड टू ईट रोस्ट ऑमलेट. डू यू गाइज नो व्हाट इज अ रोस्ट ऑमलेट? रोस्ट ऑमलेट आप लोगों को मालूम है? पॉसिबली एनी गोवन इज देयर, ही विल नो, बट अदर्स डू यू ऑल नो? देन अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल. इट्स अ नॉन वेज डिश, बट एनीवन नोज? मैं थोड़ा खाना खाता हूँ गाइस. ओके, डोंट माइंड. ओके, बाद में करेंगे हम लोग हमारा इंटेलेक्चुअल सेमिनार. आपने कहा है मॉब गेमर, व्हाट इट इज? टेल मी. बताओ. Anyone knows what is roast omelette? I'm eating this roast omelette. I can show you all, but you won't understand. It's something like this, if you all know, but it's with bread and we have it in evening times. Goans. हाँ, एक का सही है. Hi Noscope, how are you? Hi guys, hi everyone. Yeah, so let me give you all omelette with rose. No, it's not omelette with rose. It's roast. Roast in Konkani means gravy. It means gravy. So this is a evening snack, you can say. We Goans normally have this at. आप लोग गोवा में आते हैं तो किधर भी जाओ ऐसे इवनिंग रास्ते पे आपको like you will find gadas, carts who sell these things, like people stand and eat there. ये नॉर्मली क्या होता है जानता है? ग्रेवी होता है जो हमारा
Like many people do it differently, but उसमें ज़्यादा coconut होता है, तो it's very thick gravies. And omelette, like 1 omelette or 2 omelettes fried, and the gravy is put, and it's hot. You have to have it hot with the bread. And उसके ऊपर थोड़ा onion डालते हैं, if you want. Some people like small onions, like very fine onions or big onions. There are many choice of people. It's like pav bhaji type, but then we have mutton and all those things, other things. But this roast omelette is a famous thing. Whenever you all come to Goa, you all should try it. You find it anywhere in Goa, all over Goa. You'll find it. Evening time. No slope. How is work? Yeah. You normally eat with pav. Some people like parotas, but pav is the main thing. But there are different type of pavs also we have. We have something called kadak pav. Kadak is hard, which I also like a lot. Sometimes then we have katriya pav. Katriya means a cut bread. It has a cut. It's like mostly Portuguese these breads, different style of breads they copied. And then there is poi. Poi bola to it's like another wheat, I think so. I also don't know, not flour. It's wheat. Wheat ka bana hota hai itne mere ko. Then bakri is another round one we have. But bakri and we normally eat in the morning, possibly. Oh, good. Good. Do MBA. Very good. Very good, Nosto. It must be hot now. उधर गर्मी बहुत होगा. What I was Lexo? What RP are you talking about? मैं कहाँ RP में था 2000? कौन सा चीज का बात कर रहा हूँ? Yesterday we were doing document. Hi, Absolute. How are you? Hi, Fun Gaming. Hi, Agdeep Singh. Views on Kazer's high table RP. I've not seen it. I'll have to see tomorrow. Today, highlights. Possibly if I get time, I'll see. Ah, I'm eating roast omelette, XD Gamer. I'm eating roast omelette. I think you can find it in Maharashtra also, a little bit, some places, possible. Because Maharashtra ka cuisine और हमारा cuisine somewhat same है. But not Nagpur, Maharashtra, not North Maharashtra. I mean the coastal Maharashtra, even Mumbai. हाँ दीदी मैं बहुत गर्मी है. Shivmog, thank you very much. Shivmog Diaries, huh? Shivamog. Are you from? Where are you from? Karnataka? कौन से place से Karnataka के? I might come for a tour in Karnataka now. Vehicle tour. मेरा vehicle Wednesday को आ रहा है. Somebody was asking me vehicle आया. Wednesday को आ रहा है guys. Possibly ये लोग पेपर वर्क करेंगे तो Wednesday को मेरे को मिलेगा. पर बताया मेरे को Wednesday मांगता है कैसे भी. Hi Mango. Oh, Akshay Shinde, my day just started some time back. Whole day I was sleeping. Because there were no lights. There was maintenance going on in my district. वो बारिश के पहला मेंटेनेंस करते हैं. अभी बारिश आएगा ना हैवी. अच्छा बेंगलोर में बारिश हो रही है. ओके. Oh fuck, their lights are gone again, guys. There is, I think still they are working on it, but now it's on. It's on UPSs, but it will run for some time. But anyway, we can chat. Game नहीं खेल सकता हूँ because once graphic card comes on, then heavy consumption of electricity will happen and I'll be able to play only at like 1 hour. Let's come back. आया लाइट. He's back. Shimoga, you're from Shimoga? Oh, it's close to us. I've been to Shimoga, I think once. एक बताओ मेरे को, is it in Halyal is in Shimoga district? Dandeli and Halyal.
एक्वा कोलकाता में बारिश हो रहा है. हाँ. अच्छा अलग से वो नेली करता है. नेली does those things. Riddler and all this. मुझे पता नहीं. Hi Spybot, how are you? कैसे हो Spybot? I'm eating roast omelette after a long time. It's really tasty. Oh, this is from some restaurant Spybot. मडगांवचे एक रेस्टॉरंट असं ऑर्डर केलाय स्विगीचे. बट गुड ऑमलेट हापा वचपाचें म्हाका मडगांव अशोका बरें वचपाचें उल्हासनगर. बागा क्या बोल रहा था मॉब गेमर? जार पे हम लोग करते हैं ना काम. फ्रॉस्टी कर रहा हूँ मैं, करता हूँ जब रिक्वायर्ड है तभी मैं करता हूँ. क्या बागा को कोड क्लर्क का आरपी करना है क्या? डीएम कर सकते हैं मेरे को. You are from Malvan district. It's almost the same food. Yeah, it's same food somewhere. अच्छा जोक फॉल्स सिरसी के रोड पे. It's close to Sirsi, right? Joke Falls is close to Sirsi. Ah, so fuck, I was an idiot. Actually, I was not asking Dandeli. I wanted to ask you, is it in Sirsi and कौन सा है? Baba. Oh, the fuck, I forgot the name. Where Kadamba Empire capital was there. Banwasi, and this comes there, right? I used to come a lot there because of some reason. When we were young in college, I used to come in Banwasi district, this area. I know those areas. But मैं आएगा Joke Falls तो I'm coming. That is what my plan is, to take the vehicle and go to Joke Falls only. Actually, सागर ही जाने का plan है पूरा. Yeah, Spybot, it's too heavy. Somebody's calling me and my hands are dirty. Guys, I'll be back. 1 minute is over. मैं आ रहा हूँ. Guys, this is called mango sart. साला आप लोग बोलेंगे ना मैं कितना खाता हूँ. Yeah, I'm eating a lot. I'm become fat, but I want to finish it quickly. I want to go on diet. ये mango का बना हुआ sart है. Sart. Might be all know. Maharashtrians also know this. It's made from mango, smashed mango.
It felt like I'm attending Indian wedding. Yes. Aam papad. You all call it aam papad. हाँ वही हो गया आम साट आम पोली. This is made of Alfonso mangoes. It's very tasty. Too much is not good. Bad for health. Okay. Okay, let's go. Let's start working, guys. So, क्या चल रहा है? Yesterday's thing. Who is there? Abhi, that guy is. Yesterday's helpers of us are there, who are helping us. Bobcat start watch. Okay, good. No, it's not kind of jelly. It's more of like a papad. You can say it's like a papad. Okay, wait. I have to call PP's here. Yeah. हेलो हाँ देखो फ्रॉस्टी है तो देखो. बुलाता हूँ मैं भी. Good Xavier good. Love from bathroom. Oh, wow. तो बत्रा को भी बुलाऊँ मैं. बत्रा को बुलाओ. हाँ. Noscope I have ordered this booked tar is getting delivered on Wednesday. I'm good, Shuraji. What are you eating? Aisha, I'm eating mango papad. तो बत्रा भी आ गया. जी दो. फ्रॉस्टी है तो देखो. फ्रॉस्टी का मैसेज नहीं आया अभी कोई. ओके. वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करूँ तो आपको नहीं डॉक्यूमेंट की. वो है ना तो कल और एक डॉक्यूमेंट का किया हम ऑलरेडी. सो उस उधर से स्टार्ट करेंगे. अच्छा ओके. मैं लिंक भेज देता हूँ. हाँ उसको भेजूंगा. Yeah, knives I handmade cookies. Yeah, I love. But don't no more. I want to stop eating now. I just had a feeling some days back also. But enough. July, August, September, no more eating. Diet. वो आवाज इसमें आ रही है क्योंकि वो मेन स्पीकर पे दिखता है लोग इसलिए. चलो मेन स्पीकर से निकालेंगे एंड वी पुट ऑन हेडफोन्स. अच्छा ये मेयर को चीफ मिनिस्टर बना दिया इसका. या there will be no mayor elections. The elections will happen for the whole state. Guys, music loud है. पीपी. हाँ Sorry. Okay, it's state legislative act. I mean, you correct किया. अपने आप की रेस्ट मुझे ज्यादा.
Chalo guys, come on now, everyone help us how we were doing yesterday. Let's start debating on things. मेरे को तो ये डॉक्यूमेंट थोड़ा दिन और जाएगा, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा वो. इसको बहुत और चीजें हैं. We will have to sit with it and decide on those things also. It won't Now I just- created a rough for this. While I was drafting this, I'll let you know. No, this document तो is मैंने okay. सोचा This था prelim- document we have done properly. We have some corrections we have to do. Not this document. There are many Yeah, other yeah. documents we have to create now. That's what I'm talking No, about. yeah. Um, Oh yeah, definitely. इसके अंदर मैंने सोचा था पहले इसके जो चैप्टर 1 होगा अपने उस पर डेफिनेशंस हो गई, Hi, चीफ Tyler. मिनिस्टर्स, डेप्यूटी जो हो गए, ये चीजें हो गई. इसके बाद जैसे डिफाइन होगा चैप्टर 2 के अंदर देयर पावर्स एंड ड्यूटीज. अभी इसके बाद डीओजे को भी एक बार डिफाइन करना है. फिर चैप्टर 2 के अंदर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी नहीं चीफ नहीं वो मिनिस्टर्स, ऑलरेडी डीओजे की क्या नहीं पावर्स हम होगी. लोग ने वो डोंट वरी यू डोंट डू एनीथिंग मोर नाउ वील डू द करेक्शंस एंड देन वील गो फॉर फाइनल दिस. वो अभी हुआ है. Okay. जस्ट वी हैव कॉल्ड यू टू टेल यू व्हाट विल बी यू नो थिंग्स यू माइट हैव टू डू एक्स्ट्रा एंड ऑल दिस विल टेल यू नाउ. वो चीज़ों पे या we are just changing the whole structure of the thing. It's the same thing but we have made it a state and both चीज़ें उसमें state के हिसाब से हम लोग इंडियन के हिसाब से डाल रहे. या Okay, so we had done this section with PP either. Okay, we didn't. Deputy Chief Minister is the column which we'll be removing. We don't have Deputy Chief Ministers, so that will go. उसको निकालो PP. पूरा रिमूव करना है. हाँ, Deputy Chief Minister को निकाल के रखो ये डॉक्यूमेंट से. वो इसके डॉक्यूमेंट में सेव करके रखा है तो वो डिलीट नहीं होगा. नो मेरे वाले में है. हाँ, so ये डॉक्यूमेंट निकालो. अभी what we had to decide is was the main thing was which we were yesterday still worried about was cabinet. So उसका अभी तक बाकी है. Yeah. But we'll wait. We will still not touch it. We'll now go into what was this conduct of election. अच्छा, और एक डॉक्यूमेंट जिसने इसने भेजा है वो पीपी ने भेजा था. वो कौन सा है? चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड कैबिनेट लॉ. हाँ उसमें बट वो नहीं था. Conduct of election is a handbook of election commission. You have to write the handbook of election commission on top. Section 6 नहीं ये निकालो. Section 6 निकालो. अच्छा हैंडबुक ऑफ इलेक्शन कमीशन हैंडबुक. हम लोग इलेक्शन कमीशन बोलेंगे उसको और कुछ बोलेंगे. गाइस चलो आइडिया दे दो सब लोग. इंडियन पर्सपेक्टिव से जा रहे तो इलेक्शन कमीशन वुड बी बेटर. That's the Indian this anyway, but many countries also use the same word. But we can use some other word if we have some innovative ideas. Abhishek आया good. Election Commission ही best है. Okay, conduct of election will be the first topic. लिखो नीचे. Election will be conducted. Election will be conducted by the authorities of the by the governor with the help of a team selected by him. I know guys why the voice is down, because I think now the voice will be good. Check. Hello. हाँ, इलेक्शन कमीशन बोल के सेपरेट नहीं करेगा मैं अभिषेक. देयर विल बी नो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन.
It is like only will come into force is when the elections will happen and it will be formed by the governor. Uh, yeah, we can say election will be conducted by the team selected by the governor. Change करो उसको थोड़ा. Election will be conducted by the team selected by the governor. को वो governor निकालो. Conducted by the governor निकालो. Election will be conducted by the team. By the no, by the team selected by the governor uh, of the state. Comma. या फिर formed by governor. नहीं. Of the state. Point डाल. बाद में. Next. Team selected by the governor of the state. The state elections will be conducted in a fair and fair means by giving equal chance to every citizen No, this is first thing I'm just writing in a paragraph. Then I'm going a point system by defining things. Okay, एक ये हो गया with a fair chance to participate in the election. This is like a preamble of the conduct of the election. ओके अभी इसको ऐड कर सकते बाद में और बाद में नीचे जाओ डिफाइन करना है टर्म्स को सो दैट इवन श्री यू कैन डिफाइन स्टार्ट डिफाइनिंग टर्म्स टर्म्स बोला तो पहला टर्म आएगा इलेक्शन कमिश्नर उसका आएगा पहला टर्म इलेक्शन कमिश्नर the mean guy governor is not selected governor is hi Akshay governor is the head of the management that will be RJ terms बोल के लिखना नहीं है I don't think so you have to write terms and whatever it is like just election commissioner and then define who is election commissioner ये तो ऊपर भी कर सकते हैं ना ये डेफिनेशन वो डिफरेंट है वो अच्छा ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए अच्छा every department has different roles so every department will be this is a handbook for the election commission to conduct the election every 45 days that is a law which defines on what will be after winning an election how will be a cabinet defined so I'll define election commissioner a person who will be wholly and solely in charge उसको ये करो हाँ बोल्ड मत रखो hi guys hi Ali a person who will be whole not that holy fully don't say holy fully 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 in charge D निकाल of conducting the elections conducting the elections he will be the authority who will deal with political parties अभी लिख के रखेंगे will deal with political parties candidates nominations कॉमा डालना है पॉलिटिकल पार्टीज के बाद भी कैंडिडेट्स नॉमिनेशंस
and elections. Zoom करो. It's not, you guys can't see. देखो अभी देखो. Okay, and elections. Okay, after that next para for him only. Next para, he's only. As election commissioner has the right to declare model code of conduct, enforce नहीं, enforce in the state नहीं, enforce ही डालो अभी. Enforce भी मत डालो, दूसरा वर्ड यूज करेंगे. इलेक्शन में द राइट टू डिक्लेयर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्फोर्स निकाल के एंड डालो. एंड राइट टू डिक्लेयर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट and declare the date of elections. Declare the date for nominations, withdrawal, and elections. Declare the date of nominations, withdrawals. Withdrawals is the right word. Withdrawals. Okay, we'll use it now. Elections, and result. ओके ओके, अभी निकलो दूसरे इसमें जाओ. इलेक्शन कमिश्नर इज डन, विल गो डाउन. अभी आएगा कैंडिडेट. पॉलिटिकल पार्टीज का अभी डिफाइन नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट इलेक्शन में डिक्लाइन करेंगे. इलेक्शन पूरे सिटी का है अलियसन. इट्स नॉट इट्स लाइक फुल. इट्स अ चीफ मिनिस्टर इलेक्शन. Campaigns will come in his model code of conduct document. Model of code of conduct separate document होगा पेन. उसमें वो लिखेगा सब कुछ, क्या क्या कर सकते हैं, कितना बजट है, कितना स्पेंड कर सकते हैं, कौन सी भाषा यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ उधर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा, वो डॉक्यूमेंट में आएगा. ये सिर्फ हैंडबुक है, डिफाइन कर रहा है कि किसका अथॉरिटी क्या होता है ये इलेक्शन कंडक्ट करने टाइम. ओके, कैंडिडेट. A candidate is a person who files a nomination. पीपी लिखो. Files the nomination, files a nomination, I think. Files a nomination. A nomination for elections of the state. State Legislative Assembly. ओके, उसमें आएगा बाद में. सही हो, इतना ही बस इसको डिफाइन. सेकेंड थिंग, विटनेस. कैंडिडेट के नीचे जाओ, विटनेस. A witness is a person is a person who guarantees, hi sir, who guarantees the candidature of a person ओके. नेक्स्ट इट विल गो. कैंडिडेट हो गया, विटनेस हो गया. अभी कौन आएगा? वोटर. A voter is a person
from the city so from the state, sorry, from the state of San Andreas. A voter is a person, a voter is a registered citizen from the state of the this. Okay, from the state of St. Andreas, whose age will be 18 and plus, 18 and above. and above. Okay, बस ये भी define हो गया. So election commission book is defined very well. So this is how it is. Okay, term नीचे लिखो term TRM. Okay, a term is the time. No, term निकालो वो वापस term मत लिखो. Is the time from the date day of results, from the date of results, date equals so day we रख the date of results to the last day in the office. Okay, done. So अभी नीचे जाओ, नीचे पे अभी इनको सबका पावर्स प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, अभी नीचे पे पहला इलेक्शन कमिश्नर्स की ड्यूटीज डिफाइन करेंगे. ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखो. So in the vote it's right to put 18 years, but don't we put the thing also the people above the state ID will not vote? No, Abhishek, that we will not, because this is a whitelisted server. We know how many people will do that fuck up. We will have a cutout from the election commission side, so we'll understand that. Let the election commission later on in his announcement tell from this state ID, no above that state ID you cannot vote. That the election commission will say, because every time it will be different in every 45 days. So इधर हम लोग को नहीं बता सकते, वो election commissioner को बता दे, उसका power है वो. The election commissioner has ultimate power in conducting election elections in the state of San Andreas. In conducting election in the state of San Andreas, okay? So has ultimate power. Election commissioner can appoint a team will appoint a team to conduct free and fair elections. No, election commissioner का वो ये करता है, team to conduct free and fair elections. ऊपर जाओ पीपी थोड़ा ऊपर जाओ और उधर ना फर्स्ट पैराग्राफ में election be conducted by the election commissioner selected by the governor. टीम निकालो उधर से. इधर देखो टीम है साइड में, वो निकालो और इलेक्शन कमिश्नर डालो. सो द गवर्नर विल सेलेक्ट द इलेक्शन कमिश्नर एंड इट इज ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स टू सेलेक्ट द टीम टू कंडक्ट द इलेक्शन. नीचे आओ अभी वापस. इलेक्शन कमिश्नर कैन अपॉइंट द टीम टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. A team to free, correct, appoint the team conduct free and fair election. The team will consist of 5 members
and should represent all religions, caste and creed. ब्रीड नहीं हरामी, ब्रीड बोल के क्या, क्रीड. क्या क्रीड है क्या? क्रीड. ओके. टू फिल उधर पॉइंट निकाल. टू फुलफिल द एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखो उधर. क्या किधर लिख रहा है? लास्ट में लिखो बोला, ऊपर लिख रहा है. टू फुलफिल द एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है एथोस? एथोस. ई एथोस ई से स्टार्ट होगा ना, ए से. इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो स्पेलिंग बाद में चेक करना है वापस. कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सी बड़ा होता है, कैपिटल होता है. कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा रिस्पेक्ट होता है वर्ड्स में. ओके. ही विल अभी नेक्स्ट उसके बाद लिखो. he will have all the powers of he will hold all the powers over every department in the city. Election commissioner will hold all the powers over all the departments functioning. FNC functioning spelling check करो वापस. And hold the powers all over the departments functioning of state departments. और नहीं of the state कर रहा मैं. Point. नहीं point नहीं, of the state excluding DOJ. Comma डालो. This will only apply from the day election has been declared till the results. It will only apply from the date of election declare to the final results. Final results. डन. अभी नीचे जाओ. ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन हो गया. ओके नीचे जाओ. कैंडिडेट अभी कौन सा था? नेक्स्ट कैंडिडेट का लिखेंगे. कैंडिडेट्स ना, कैंडिडेट नहीं, यस हो गया. कैंडिडेट्स हु विल बी. कंटिन्यू करो. उसमें एक पॉइंट्स डालो. अभी ये पहले वाले में एक पॉइंट्स डालो. ए डालो. ये पहले में अभी बी करो. वैसा अभी ए करो. क्या बोलते हो इसको? बुलेट्स डालो. इसको नहीं, इसको रहने दो ऐसा ही. नीचे को ए डालो. इलेक्शन कमिश्नर अल्टीमेट पावर ना, ये डालो उसमें. और उसके बाद वो पैराग्राफ छोड़ के डाला है उसको बी डालो. वो नहीं भाई, ऊपर वाले को ए डालो, नीचे वाले को बी डालो. पीपी ऐसी है ना? ओ फक, मैंने कुछ निकाला किधर. रुको. ओके. नहीं, ए है वो ऊपर पैराग्राफ के और बी नीचे पैराग्राफ के लिए. देखो वापस ये इसके लिए है. अरे वो टाइटल हुआ, उसको छोड़ो, उसको हाथ मत लगाओ. और इलेक्शन कमिश्नर अल्टीमेट पावर उधर ये डालो. अच्छा यहाँ पे. हाँ, इसको बी डालो. नीचे वाले को नहीं, इसको बी डालो. इलेक्शन कमिश्नर को बी डालो. सेकंड पैराग्राफ को हाँ बी डालो. अभी सी करो. कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग. अभी उसको भी स्पेस छोड़ो ना.
बी को स्पेस चढ़ा था वैसा ही स्पेस छोड़ो. हाँ. Candidates contesting elections has to fulfill the criteria laid down by the election commissioner in his in the model code of conduct document. Candidate contesting क्या election has to है fulfill the criteria laid down in the model code of conduct. Okay. uh, इधर इलेक्शन कमिश्नर मत डालो, इलेक्शन कमीशन डालो नीचे इसमें, कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन. No, Hamza, they cannot delay. Delaying will only come from the governor, not from them. Code of conduct election will fulfill the criteria laid down in the model code of conduct by the election commission. Dot. D major. D करो, D. Next D करो. कर दिया वो नीचे स्क्रॉल करो आप. हाँ नीचे गया. Okay, D में लिखो election commission can file FIR can not file can file with the help of the PD can file FIRs if any violations of model code of conduct, if any the election commission can file not commission, you can say election commissioner, एक ही को देंगे वो power. Election commissioner can file FIRs if any violations of model code of conduct सही है. made by the candidates वही लिखा ना मैंने, वो मेड बाय द कैंडिडेट्स. or candidates or the supporters of the candidates. वो पॉलिटिकल पार्टीज रखेंगे. सपोर्टर्स बहुत वेग वर्ड है. वो पॉलिटिकल पार्टीज रखो, वो फ्यूचर में अच्छा पड़ेगा. कार्यकर्ता. ओके नेक्स्ट उसमें और ऐड करना है, वो बाद में देखेंगे. विटनेस. विटनेस इज अ पर्सन हु गारंटीज, वो तो लिखा है ऊपर. सो विटनेस शुड बी ऑलवेज अ सिटीजन, from the state of Los Santos, state of St. Andreas, who has been residing for past कितना दिन रखेंगे guys? Past 40 days, past 30 days रखो in the state. पास्ट 30 डेज कब से काउंट करना है? जिस दिन इलेक्शन होगा उसके, या फिर जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होंगे? 30 डेज पहले कब से रखना है? जिस दिन इलेक्शन है, या फिर जिस दिन from the day of nomination. Yeah, Hamza, we will add that. Wait. 30 days from the date of nomination. Okay. A, B, C, D, E, F. F में जाओ. We'll touch this point also. Election. The state. The election commissioner is responsible to declare a fresh election within 7 days, within 10 days रखेंगे. Within 10 days
So declare flash within 10 days. ओ उसको ऐसा रखो, थोड़ा ऊपर जाओ, एफ और एक पॉइंट देता हूँ, ऊपर जाओ, इसको नीचे लाओ, इसको बाद में डिफाइन करेंगे, ऊपर उससे ऊपर और एक पॉइंट डालना है आपको, इसको नीचे लाओ, ये एफ को नीचे लाओ और एक देता हूँ. Okay. The governor has the right to declare governor's rule by dissolving the state legislative assembly. इसके और भी है, रुको. उसका ही वो असेंबली के बाद पॉइंट के बाद और लिखो, after 45 days from the election results, automatically the state assembly will be dissolved and a governor's rule will be declared. After 45 days from the After 45 days from the results, the state legislative assembly will be dissolved automatically. गाइस मैं पहला लिखता हूँ और बाद में उसको रिफाइन करेंगे हम लोग. हाँ, पहला लिखता हूँ क्या क्या लिखना है, मैं तो भूल जाएगा. Will be dissolved automatically. The governors will be enforced. The election commission is responsible to declare fair selection within 10 days of governor's rule. Okay. Vishwas, go to politics. It's very interesting. Okay, so now we have defined these rules. We have defined now witness, also voter. Now next will be voters definition. Age में जाओ. A voter should minimum minimum 18 years, should be minimum 18 years, who will be authorized to cast his vote. Authorized to cast. Okay, enough. Vote भी डालते डालो. Okay. वोटर बाद उसके बाद he should वोटर शुड क्या बोलते हैं उसको, वोटर शुड वैसे, अच्छा, वोटर शुड नेवर इंडल्ज इन एनी क्रिमिनल or monetary benefits to decide his vote. criminal Or monetary influence or monetary benefited to influence his vote. He should decide in his own wisdom
by नहीं नहीं, वोटर शुड डिसाइड इन हिज ओन विजडम. इन दिया उधर वो प्लूरल बन गया है. वोटर्स होता था, डिफरेंट होता था. वोटर हम इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं. वोटर शुड डिसाइड इन हिज ओन विजडम, इन हिज ओन विजडम. और देर मतलब वो खुद का भी हो गया ना एक को. वोटर शुड डिसाइड इन हिज ओन विजडम. बाय निकालो इन हिज ओन विजडम. वो वोटर्स होते थे इन हिज और हर्स. राइट, यू आर राइट इन दैट. इन हिज और हर्स ओन विजडम. हम सिंगल इंडिविजुअल का बात कर रहे. डन. नीचे जाओ. Should we add here that a voter should minimum be 30 days? ना वो नहीं मांगता है. वो उसके स्टेट आईडी से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऐड करेगा इलेक्शन कमीशन. लास्ट आएगा टर्म. A general term for a state legislative assembly will be 45 days from the day of results. From the day of results. Assembly and BLY, it's not T. 45 days. ये पॉइंट पहले ऐड नहीं कर दिया हमने अभी. नहीं वो इधर रखो. अभी बाद में देखेंगे, निकालना है तो निकालेंगे. अभी वापस पूरा चेक करेंगे विथ ऑल सजेशंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सजेशंस गाइस. ऊपर का तो हो गया. ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन. ए इलेक्शन कमिश्नर हैज अल्टीमेट पावर इन कंडक्टिंग इलेक्शंस इन द स्टेट ऑफ सेंट एंड्रियस. इलेक्शन कमीशन कैन अपॉइंट अ टीम टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कैन नहीं, शुड अपॉइंट. कैन निकाल के शुड करो. Appoint a. Election Commission should appoint a team. Appoint a team to conduct free and fair elections. The team will consist of 5 members and should represent all religions, caste, creed and creed to fulfill the ethos of the constitution. Guys, अभी इसमें थोड़ा ये दे दो. श्रेय इधर. श्रेय, you also can give your ideas on this. Yeah, I'm here, Tom. Yeah. Let me read through it. Chat, you all also give ideas. Abhishek, everyone can give ideas now on this point. Is it proper? We need the to duties, add right? something or something like that. Yeah, the तो A1. Frosty आ गया. Hi, Frosty. Yeah, Frosty, we are just going on things. We have done the duties of election commission. So we have done some points. So you can go through them. हाँ मैं देख रहा इसका टाइटल सही नहीं है ब्रिटिश, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स भी आ गए इलेक्शन कमीशन में. तो अरे इलेक्शन कमीशन में कैंडिडेट्स भी आएंगे. सब कुछ वो हैंडबुक है उनका. दे आर डीलिंग विद इलेक्शन कमीशन, नॉट बिजनेस. अरे yeah, it's for the election commission to know क्या किसके लिए है. ठीक है. I think they are just mentioning. Okay, guys, read this and tell me. You all can read it. Any suggestion on this, or otherwise we'll go to the next point? Do you all think that somebody else should appoint the election commission's the people, or is it best that the election commissioner only decides his team? Because why I put it this way is because every time people can change. Every election there will be a different team. And you don't have to put the same people there and all this. So the election commissioner also can change because the governor can change him and he can form his own team. Imagine ex election commissioner अभी है, वो change हुआ next time, वो अपना खुद different team appoint कर सकता है. Yeah, election commissioner, that's right.
So B point, the election commissioner will hold all the powers over all the department functioning of the state, excluding the DOJ. This will only apply from the date of election declared uh, to the final results. This means actually why this is power. These are the powers for him so that there is a free and fair election. Bola to the police and everybody will work according to what he will say and what is required because that power he requires that time so that the candidates get a free fair election. कुछ इलीगल चीज़ें हो रहा है इलेक्शन में वो कुछ कोई कंप्लेन किया कोई तो उसको राइट मिलता है पुलिस को ये करने के लिए एंड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इज बिकॉज नॉट फॉर द फर्स्ट इलेक्शन फॉर द फ्यूचर इलेक्शंस क्योंकि क्या होगा फ्यूचर इलेक्शन में जो सीएम रिकॉन्टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा वो स्टिल उसका दोस्ती होंगे पुलिस के साथ बहुत वो अपने कैंडिडेचर को सही करने के लिए पुलिस से दोस्ती करके वो दोस्ती से पुलिस को प्रभावित कर सकता है so that to become it fair for other candidates the powers will go to election commissioner so he will not have nothing to say सीएम के पास उतना पावर नहीं होगा कुछ करने के लिए इसलिए वो चीज and DOJ is excluded wait I'll finish my thing DOJ is excluded why is because of again if the election commissioner takes any wrong decision or something then the candidates have a right to go to DOJ to try to find a solution. The DOJ can guide the election commission in certain places. जैसे अभी समझो election commissioner ने किसी का reject किया form nomination, so he doesn't have any recuse. So उसको DOJ के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मेरा wrongfully ये किया है, reject किया है. So if DOJ thinks that this is wrong, then they will tell election commission please accept his form. So they will overrule that decision of his. So it's a check and balance normally for that. हाँ अभी बताओ श्रेय क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था यही एग्जैक्ट चीज कि डीओजे एक अपैलेंट बॉडी हो गई ना इलेक्शन कमिशन की अगर इलेक्शन कमिशन के किसी डिसीजन से सैटिस्फाइड नहीं है कोई सिटीजन डीओजे विल वर्क एज एन अपैलेंट बॉडी Yes. Yeah, we should write that down in this also, right? Not in the duties, like down No, the it's line. already been told. It's already been said excluding the DOJ. Excluding the DOJ itself proves that the DOJ... See, that thing you don't have to write as an appellant body. DOJ is an appellant body of everything actually in the city. It is a law. So people have only authorities to go to DOJ. Now you all want to write an additional point of it. We can add there. We can add in the this, but this is the duties of election commission. We have to add that in the model code of conduct document because model code of conduct document is for the candidate. So he will know that model code of conduct which will change every 45 days when he'll publish it. Okay. Okay, yeah. Third point, candidates contesting elections have to fulfill the criteria laid down in the model code of conduct by the election commission. Yeah, this third point is directly giving the powers for the model code of conduct this document. Yeah, बाद में उसके नीचे जाएंगे D. Stream offline हुआ. I think it reconnected, guys. Yeah, it got reconnected. Refresh करो, refresh. D में D election commissioner can file FIRs if any violation. We'll give this power to both election commission and the commissioner. बोला तो we will give this power to the commission directly. So his 5 people also can do it because if the election commissioner is not there in the city, his commission people should be also given that power. If somebody complains and they think it is to be filed a FIR, then they can file the FIR. What do you think? Because right now we give the power only to election commissioner, not the commission. क्या दिखता है फ्रॉस्टी श्रेय? हाँ कमीशन को दे So देते हैं like commission only would be better. Yeah, exactly. I mean he can take the signature of commissioner but file करने के लिए कोई भी कर सकता है file. So again it will be the same thing. So it will be the only election commissioner signature which is required. So that will be the this. So should we allow the election commission? So election commission बोला तो पांचों में से जो पांचों वो प्लस इलेक्शन कोई भी जाके फाइल कर सकता है एज अवेलेबिलिटी. कमीशन कर देते हैं ताऊ like let them file it's okay. So commissioner मत करो commission करो. Abhishek, no, that law cannot ever be put at fast track FIRs and all these things. That is law and order problem. That is not commissioner's problem. If the PD is really good enough, they will do that thing. Otherwise, the court will direct the PD. The court only has the powers to tell the PD that within next 10 days, I want that FIR to be, investigated, whatever. A court monitored investigation also can happen.
but that powers cannot be given to election commission book because PD's powers they don't hold on those. Yeah, witness should be citizens of St. Andreas residing in the state for past 30 days from the date of nomination. Check this, Frosty, and see into this. Like, what do you think about this? Give me a second, huh? विटनेसेस तो वही है ना जो कैंडिडेट पर्सन, हाँ हाँ, जिसका सिग्नेचर लगेगा, राइट? नहीं नहीं In नहीं short, you ये have to be in the city for 30 days at least. विटनेस करेक्ट, विटनेस जिसका सिग्नेचर लगेगा जो नॉमिनेशन पे आएगा 5, हाँ हाँ, नॉमिनेशन वाला वो, हाँ, जो मॉडल का कोड ऑफ उसके लिए वो जो आप 100 सिग्नेचर्स बोले थे वही वाला बोल रहे हो क्या? वही विटनेसेस में आएगा क्या? नहीं, वो निकाला, वो पॉलिटिकल सिस्टम को अभी ऐड नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, सो वो नहीं है। ये जो नॉमिनेशन जब वो करने को आएगा ना, कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेशन करने को आएगा तो उसको 5 इंडिपेंडेंट सिग्नेचर मांगता है सिटीजंस का कि उसका नॉमिनेशन वो लोग ये करते हैं, रिकॉग्नाइज करता है बोल के। अच्छा अच्छा, The independent witnesses. So it's in real life also on nominations we take 2. So on those basis it is, but 5 we'll take whatever that model code of conduct document will define. But for that the guys who will sign should be at least 30 days होना, सिटीजन होना मांगता है उस सिटी में, सडनली नहीं आना मांगता है सिटी में। It's like कोई fraudulent नहीं हो रहा होगा कि नया वो स्टेट आईडी बना के उससे इलेक्शन हो रहे हैं and all that. देखो नया स्टेट आईडी वोटिंग के लिए आपको कंट्रोल करेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से, वो वोट नहीं डाल सकेगा, पर उसको इधर अगर हम इधर डिफाइन नहीं करेंगे तो इधर उसको लूप होल मिलता है। सो नया स्टेट आईडी से डायरेक्टली नॉमिनेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकेगा, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए वो दिस इज करेक्ट राइट? yeah. Yeah, so normally 45 days, 30 days is very good enough, I think, because that will show that this citizen at least has been coming in the city for last 30. He knows about the city. He knows about even that candidate, because the actually witness is giving, saying that he knows this candidate in the city and he guarantees him to be the as a you know, he deems fit him to be participating in the election to become a chief minister. For that he should at least have some sense of the city. So 30 days are in like the minimum sense he should have of the city. So okay, this is done. The next is the governor has a right to declare rule by dissolving. I बहुत important चीज यार. The governor has a right to declare governor's rule by dissolving the state legislative assembly. First point. इसमें थोड़े लोग पूछ रहे थे. So this thing, what it means, I will tell you all. This thing is in such way, it will only this powers of the governor he will invoke only when he will come to know that these people are not doing RP in the city, or there is some problems for role playing. These guys are not doing exactly what they are elected for. He thinks, oh these guys have done something against what powers they are given to do. बोला तो उनको जितने पावर्स उनको दिए थे चीफ मिनिस्टर को, उसमें उसको काम करना था, उसके ऊपर गया वो. Okay, possibly he left. Oh, possibly he has been caught tomorrow by the police and has been charged for severe crime and sent to jail. Then somebody has to govern. So that's the reason the governor will take over the state that period of time by dissolving the whole thing, and the election commission within next 10 days will declare a new election. So for that reason is the first point. Guys, जो आप लोग पूछ रहे थे वो इसमें the chat was asking these things. No, it's because of that. Abhishek, you were asking this. No, it's because of these reasons. So you all understood this thing. Frosty, you all also got what exactly is this the first point? Yeah. Yeah. Now the second point is there in that only. After 45 days from the result, the state legislative assembly will be dissolved automatically. Either governor का automatically एक ये डाला है, law डाला है. बोला तो 45 days में उसका tenure खत्म हुआ. और अभी इधर हम लोग कुछ और कर सकते हैं, इंडिया के जैसा भी कर सकते हैं. इधर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इधर की 45 डे के बाद वो ऑटोमेटिकली गवर्नर्स रूल लगेगा, एनफोर्स हो जाएगा, और उसके वो गवर्नर्स रूल में डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा इलेक्शन. पर हमारे इंडिया में वो नहीं होता. इंडिया में क्या होता है कि आफ्टर उसका टर्म खत्म होने से पहला ही इलेक्शन कमीशन को ये करना है, इलेक्शन करना है, सो दैट न्यू पर्सन हैज टू
टेक ओवर बिफोर द टर्म गेट, दैट्स हाउ दे गो. सो जब इलेक्शंस होते हैं तभी चीफ मिनिस्टर ही होता है, वो केयर टेकर होता है स्टेट का. नॉर्मली देखने को गया तो केयर टेकर नहीं बोलेंगे हम उनको, केयर टेकर तभी होता है जब उसको गवर्नर बोलता है कि यू बी अ केयर टेकर राइट नाउ, वो डिफरेंट है. पर नॉर्मली ही इज स्टिल द चीफ मिनिस्टर as a caretaker of the state, but he cannot take any decisions. That decisions are all subject to election commission during the model code of conduct. During that period of time, that is 1 month of the election or 2 months, whatever the election defines, the commissioner defines. So हमारा वैसा होता है. पर इधर हम लोग ने वो नहीं किया है. उधर हम लोग ने क्यों नहीं किया है कि हम लोग ने बोला है कि you will not hold the office, the governor will hold the office that period of time when the elections will happen. Just स्टार्टिंग में मैं ये चीज करना चाहता था, बाद में आगे आगे वो दूसरी चीज ला सकते हैं हम लोग. बट देन यू ऑल टेल मी व्हाट एग्जैक्टली वी शुड डू. सो वी शुड मेक दैट सेपरेट पॉइंट. पीपी एक काम करो, ये 45 डेज का लिखा है ना, आफ्टर 45 डेज उसको सेपरेट बनाओ, उसको सेपरेट बुलेट दे दो, एफ के नीचे दे दो उसको, जी दे दो उसको. एफ में कुछ कंडीशन डालना है, किस कंडीशन में वो गवर्नर लगा सकता है? क्या क्या? एफ में कुछ कंडीशन डालना है, किस कंडीशन में वो डिसॉल्व कर सकता है गवर्नर? नहीं, वो नहीं, वो उसका वो नहीं, कभी नहीं डालना है, क्योंकि ही इज नॉट इन्वॉल्विंग इन आरपी. ही माइट हैव इवन सर्वर प्रॉब्लम्स, ही माइट हैव इवन आईआरएल प्रॉब्लम्स. विद दैट आईआरएल इश्यूज ही माइट डू इट, because he is the end of it, the server, this right, main manager. So he might have many issues to do that. So we will keep it the power for him that he will decide. But when it is interpreted in this ways, many ways. Yeah. No, Abhishek, no, I'm not allowing that governor overthrowing, because governor has many other reasons which cannot be defined in RP. He might have IRL reasons to do that, so that cannot be part of RP, and nobody can challenge his decision on that. He's ultimate. Yeah, after 45 days, either हम लोग हमारे, what do you think, Frosty? What you guys think, Shrey, Frosty, and all of y'all? Should we keep it like India way, or should we keep it this way? No, this is fine. Though, like there should be a small block of 15 days, like 45 days, and after that 15 days we'll take for the new election, 10 and days, then 10 days, again 10 like days in the fresh election, within 10 days they will have. But that period of time, the state will be under governor's rule. He will decide yeah, on yeah. whatever happens that time. So this is good enough, right? Yeah, I was thinking like 2 months, like each phase No, we don't have that much time. for election, and No, we don't have that much time. We have to do it 45 days. no, I mean like 45 days for the rule of the party, and 15 days for the governor rule. It's like नहीं, that. वो ज़्यादा होता But है, a क्योंकि new 15 election days, happens. 15 days का देखो, वो 15 दिन किस में जाता है, कैंपेनिंग एंड ऑल. देयर इज too much for these servers. It's too much 25 days. It's best to 10 days में कंडक्ट, क्या वो रेडी हो जाएगा 45 डेज में, वो उसी दिन उसको कमिश्नर को डिक्लेयर करने दो नेक्स्ट इलेक्शन कभी हो रहा है. जल्दी होता है तो आरपी कंटेंट आता है ना, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा. नहीं, तो आई हैव अ सजेशन ओवर हियर कि अगर हम इसको गवर्नर रूल हटा देते हैं, लेट्स कीप इट फॉर लाइक 55 डेज, राइट? 45 डेज प्लस 10 डेज अपना ये हो गया इलेक्शन कमीशन को करने में. इलेक्शन तो 55th डे पे अपना नई गवर्नमेंट अपने पास होगी. हाँ, पर वो 10 दिन 45 से 10 दिन कौन अथॉरिटी होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है. इलेक्शन कमीशन इज नॉट अथॉरिटी टू रन अ गवर्नमेंट. एग्जैक्टली, उस टाइम पे जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको ही रन करने देते हैं, तो इट विल क्रिएट मोर आरपी सिनेरियोस. Yeah, he can For run. That we everyone can. to, That's what I'm yeah. saying. We can do that, or we can directly remove him out of the office, or we can start that from the I'd next say- second term of the election. The first election we will not do that, because we don't know what will come Yeah. for us. Remember, 45 days में उसका Yeah. power तो गया, but still is holding the post, but he doesn't have any powers. Okay, now imagine in that period of time he does some fuck up,
Election commission will work, will nobody will, they will arrest him, whatever those things will happen. I agree to it, but if it becomes a major damage to the server, then I mean, in that phase, we can put this governor rule in the part, but I'd say at the start, इसमें बहुत RP scenarios अगर निकल के आ सकते हैं अगर हम governor rule को for time being पहले election के लिए sideline रख देते, and we'll see this as a beta version of our election. कि how people are responding to it and how the government अब elect होगी कैसे work करेगी. उसके बाद the upcoming fourth elections होंगे उसके अंदर we can see if we have to put 15 days of governor rule or 10 days of governor rule or we can just let the elected government to be there. okay. ये governor rule से थोड़ा वो RP वहाँ पे limit हो जाएगी there are अगर very plus points to it, and it goes, it's a very good way because admins don't overrule. Hi Anu, admins don't have to do much work in this thing. RP flows वो सही है सब कुछ, उसमें वो अच्छा होता है कि 45 डेज आपका टर्म होगा और नेक्स्ट 10 डेज में इलेक्शन कंडक्ट करना है. सो उस टाइम में भी वो उसका रोल होल्ड करेगा, पर उसके पास पावर्स नहीं होंगे, पावर्स इलेक्शन कमिश्नर्स के पास जाएंगे. So as soon as the next this comes, he continues the office if he wins. If he doesn't win, he resigns near the governor and a new government has been sworn in. We can go with that also. Yeah, because वो जो 10 days का होगा जो पीरियड होगा अगर वहाँ पे वो कुछ फकअप करते हैं वहाँ से एक बहुत भयानक आरपी भी अगर निकल के आ सकती है अगर वो बंदा अच्छी आरपी करता है तो बहुत भयानक आरपी भी निकल के आ सकती है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट सिविलियंस डीओजे पीडी हो गई इन सबको भी आरपी मिल सकती है उस चीज़ से अच्छी. We can count on that if the guy fucks up or not. तो एक RP बहुत enhanced और immersive RP निकल के आ सकती है वैसा होता है. And Abhishek also, I'll tell you, that's right. Normally what happens is government can't make any decision during election period. Model code of conduct है तभी government कोई नहीं कर सकता है. That is correct. That is how real life works of us. But here we didn't do that. So we'll have to change this. After governors were dissolving the state legislature, okay, resolve the state legislature will be dissolved automatically. After 55 days रखो. नहीं आज से ताऊ 50 डेज रखते हैं 2 महीने का पीरियड हो गया ना 50 डेज रखते हैं 50 डेज के बाद 10 दिन का आपका इलेक्शन पीरियड हो गया टोटल टाइम फ्रेम हो गया उसकी जो टर्म होगी 2 मंथ की होगी ना 30 2 मंथ की होगी टर्म या 45 डेज इज गुड 50 डेज रखते हैं 40 डेज पे उसकी टर्म खत्म हो जाएगी 10 डेज जो आखिरी की होगी वो आपके ये हो गई क्या बोलते हैं इलेक्शन 50 डेज उसका टर्म होगा 45 डेज चेंज करना पड़ेगा सब जगह से 50 डेज उसका टर्म होगा ओके और 10 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जाएगा तभी भी वो पावर होल्ड करेगा. सो ओके आफ्टर 50 डेज डालो वो आफ्टर 50 डेज फ्रॉम द रिजल्ट द स्टेट असेंबली विल बी नो ये जी पॉइंट थोड़ा रिमूव करके दोबारा इसको रीस्टेट करना पड़ेगा सही तरीके से उसको वापस 60 डेज वो पॉइंट वैसा रखो कि आफ्टर 60 डेज आफ्टर 60 डेज वो आप लोग को ऐसा करना है कि 45 डेज ही उसका टर्म होगा और 15 दिन कैंपेनिंग का होगा. We can say after 45 days of the result of the state legislative assembly, the powers of the chief minister will be dissolved, but he will hold the post until the new chief minister is elected by the electoral commission or election commission. We can frame it some around the lines. 45 days के बाद उसकी powers dissolve हो जाएगी, but उसकी post dissolve नहीं होगी. He will still hold the post. तो एक जो अपना इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होगा उसके पास आरपी सिनेरियोस क्रिएट करने का भी मौका होगा कम से कम. ऐसा he can show the server as well कि ऐसा स्टेट कैबिनेट और एक पॉइंट करो उधर ही और एक पॉइंट करो लिखो या मैं जो बोल रहा हूँ लिखो पीपी स्टेट कैबिनेट मैं लिख रहा हूँ ऊपर उससे ऊपर उसके ऊपर जी के ऊपर लिखो. ओके एक सेकंड. स्टेट कैबिनेट विल हैव अ टर्म ऑफ will be having a term of 60 days which will include which will include 15 days of model code of conduct. Okay. उसके नीचे और एक पॉइंट करो. During the model code of conduct,
all the powers of state cabinet will be relied or taken over by election commission. Will be will be taken क्या लिखा है during model code of conduct all will the be powers of the dissolved. state will नहीं dissolved नहीं, will powers of the state will be taken over by the election commission. ओके ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. आफ्टर 60 डेज, नहीं नेक्स्ट पॉइंट लिखना नहीं वो नीचे वाला एडिट करना है. आफ्टर 60 डेज जो 45 लिखा है वो 60 करो. आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द स्टेट रिजल्ट्स ऑफ द आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द असेंबली विल बी वो निकालो, विल बी निकालो, वो रॉन्ग लिखा है. आफ्टर 60 डेज the result. after 60 days of the results ना 60 days the results नहीं of the results नहीं इंग्लिश रॉन्ग है पूरा. after 60 days from the results of the state assembly from the results of the state legislative assembly इसको redefine करना है पड़ेगा. from the results of the From state बैठ नहीं रहा, so grammatically from नहीं बैठेगा. We have to choose some other word. We'll figure that out later on. assembly state legislative assembly will be dissolved. Results of the state legislative assembly नहीं ऐसा लिखो. after 60 days from We the can write results that of the 60 days. election from the results of the election नहीं. लिखो. नहीं, so इसका ये भी तो लिख सकते हैं 60 days post the result from result of the legislative assembly. Post कर देते हैं ना. After हाँ, हटा देते लिखो, from लिखो, हटा देते लिखो, 60 days लिखो, post कर लिखो, वो देते हैं. सही है लिखो वैसा लिखो. हम्म. 60 days post the results of state legislative assembly बाद में उसके बाद लिखो state legislative assembly. The assembly will be the assembly वापस लिखो. The assembly will be dissolved automatically and a governor's rule be enforced. ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो भी 60 डेज में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगा ही और गवर्नर टेक ओवर करेगा. सो ये सब कुछ पूरा वही सर्कस डेमोक्रेसी का सर्कस 60 दिन में ही होना मांगता है. अंदर 15 दिन का इलेक्शन और बाद में रूलिंग वो सब उसमें ही होना मांगता है पूरा. Yeah. नीचे जाओ. नीचे क्या है अभी? नीचे हो गया. Guys, you all understood? Everyone else understood this thing? So this is perfect, I think. So let's read it again. The governor has a right to declare governor's rule by dissolving the state assembly or assembly. Okay. The state cabinet will have a term of 60 days, which will include 15 days of model code of conduct. Okay. एक मिनट. और एक पॉइंट डालना है. ऊपर जाओ ऊपर. यहाँ पे एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं. And the governor's rule will be enforced until the new. नहीं, गवर्नर्स रूल ही नहीं है. इस रूल से गवर्नर्स का रूल नहीं आएगा. तो इस हिसाब से गवर्नर्स का रूल तभी आएगा 60 डेज कंप्लीट होने के बाद. अगर नहीं किया, नया गवर्नमेंट नहीं आया तो 61 डे को नया गवर्नमेंट को स्वेरिंग इन करना है. अगर 61 डे को नया गवर्नमेंट स्वेरिंग नहीं हुआ तो गवर्नर्स रूल लगेगा. और माइट बी 62nd 63rd डे को माइट बी द न्यू गवर्नमेंट विल स्वेरिंग. इसको थोड़ा और एलैबोरेट कर देते हैं ना. ऑल एलैबोरेट करने का Governor's rule will जरूरत be नहीं. enforced. ऑल एलैबोरेट करने का कुछ जरूरत नहीं. वो डायरेक्टली क्लियर करता है स्टेट कैबिनेट को. स्टेट कैबिनेट ने ये जी वाला पॉइंट वापस चेंज करो. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखो. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिखो इसको. हाँ, सो क्लियरली काट करता है क्योंकि उनका 60 डेज का टर्म है. उसमें 15 दिन आएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का. ओके, 60 दिन हो गए. नया गवर्नमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो उनका प्रॉब्लम नहीं है. ऑटोमेटिकली गवर्नेंस रूल लगेगा अगर कोई स्वेरिंग इन नहीं करेगा. 61 डे को और कोई स्वेरिंग इन करेगा, गवर्नेंस रूल नहीं लगेगा, डायरेक्टली नया गवर्नमेंट आएगा. वैसा चीज है वो. सो दैट्स ओके, दैट्स क्लियरली दिस. नो, आई वांटेड टू चेंज अनदर थिंग. गो अप इन द दिस हैंडबुक, इलेक्शन कमीशन हैंडबुक का वो टर्म्स डिफाइन किया है ना, उधर और एक टर्म डालो. कैंडिडेट इलेक्शन कैंडिडेट के नीचे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं कैंडिडेट के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोल के लिखो.
until a new, वो अभिषेक देखेंगे, रुको एक मिनट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लिखो, इसमें लिखो a document which will be published by the election commissioner, document which will be published by election commissioner on the day, give me a second though. By the election commissioner. yeah, with guy On which the will on the day elections are declared, and the day of elections are declared. This document will contain this document will contain all the rules and regulation as to how an election has to be conducted, all the rules and regulation as to how the election has to be conducted, how a nomination has to be filed. Tao, by give me a minute. candidate. I'm getting a call. Give me a minute. Give me a minute, please. Yeah, sorry about that. Yeah, the document will As contain to how? as to how क्या लिखा है, the document will contain all the rules and regulation as to how conducted, नहीं नहीं ये पूरा मत लिखो, ऐसा लिखो, डायरेक्टली एक शॉर्ट फॉर्म करेंगे. इलेक्शन डॉक्यूमेंट विच विल पब्लिश इलेक्शन कमीशन ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड. दिस डॉक्यूमेंट विल कंटेन all the required information for the candidates and the voters. Candidates, voters, and conduct of election. Candidates, comma, voters, and the conduct of election. ओके, नीचे जाओ वापस. अभी नीचे जाएंगे वापस. किधर पहुंचे थे हम? ड्यूरिंग द मॉडल कोड कहाँ था? 60 days after 60 days after the result of state legislative assembly will be dissolved automatically and will be enforced. Until एक किधर लिखना था? आप लोग कहाँ बोल रहे थे अभिषेक? Until new government. मैंने यहाँ बोला था कि गवर्नेंस रूल विल बी इन्फोर्स्ड until the new chief minister is elected. या वो लिखना पड़ेगा. लिखो until the new कैबिनेट लिखो या गवर्नमेंट लिखो? न्यू चीफ मिनिस्टर. कैबिनेट नहीं, हमको नहीं लगता है. न्यू चीफ मिनिस्टर इज बीन सोन. गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो विल कम इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मीन गए. ओके, ये हो गया. नीचे जे में जाएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्लेयर फ्रेश इलेक्शन विद इन 10 days ऑफ द गवर्नर्स रूल. नो, ये निकालना पड़ेगा अभी पॉइंट. ये भी चेंज करना पड़ेगा. उन्हें सही मत निकालो, सही है वो, पर उसको कंडीशंस डालना है. इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू डिक्लेयर फ्रेश विद इन 10 days ऑफ गवर्नर्स रूल इन केस ऑफ असेंबली इज डिसॉल्व्ड. ये किसको लगेगा? जब गवर्नर किसको डिसॉल्व करेगा असेंबली, वो खुद ही कैबिनेट रिजाइन करेगा और बोलेगा कि वी आर डिसॉल्विंग द हाउस. ये तभी लगेगा ये पॉइंट. Voters should be at least 18 years old who will be authorized to cast a vote. Voters should never indulge in criminal or monetary benefit to influence their vote. Voters should decide on his or her own wisdom. ये क्या है पॉइंट? ये अच्छा है गाइस. एवरीवन वॉच दिस गाइस. के देखो सब लोग. नहीं सर, ये वोटर्स शुड नेवर इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज. अच्छा हाँ, ये सही. मुझे लगा तो उसका प्रायर्स नहीं होने चाहिए. Yeah, so next one will go. Yeah, that's good. Yeah, a general's term for state legislative assembly will be of 50, कितना बोला है? 45 days. नहीं 60 days. नहीं 60 करा हमने. 60 days. 60 किया पूरा. Date of election result. Okay. और कुछ पॉइंट बाकी है तो याद करो अभी. Shri, Frosty, anything else you are thinking or any chat anyone wants to give anything can tell.
Usually, yes, Anton can vote. Scientifically we found out that Anton has more better wisdom than other citizens in the city. Any else points we have to add here? नहीं. Yeah, these are done, right? So this covers up two topic of ours today. One is election commission handbook. So उनका department ready हो गया जो election conduct करेगा. How government will function, we have already decided on the first document, which we have to still left with some things still are left, which we need to discuss. I think in that. So We these two. also might need to lay out the format of manifesto and That their no, application that is the for- third document which we need to make ready is manifesto. That is the third. Yeah, So yeah. not manifesto, sorry, model code of conduct. That is the third document. In the model code of conduct, there will be every guidelines given what a candidate should do, what an election commission can do if you not do this, and all those things will be defined there. What will be a manifesto? What can be used in the manifesto? Okay, how the who will be appointed to look after the budget of that? How the candidate should declare his budget for the this, and all those will be in that model code of conduct document. It will also give the a lot of other things clarity to a lot of other things how to conduct, like poster use कर रहा है तो कितना books को वो सब कुछ, what kind of language can be used during public rallies, meetings, what kind of permission can be used, has to be taken if you want to have a rally in the city, and all those will come into that in the model code of conduct book. Now that book will change every time when a new election commissioner will come, and he will might add more things with the old thing. He might change something with his election. There are a lot of things he can change there. But these two documents, one is the CM's document, whatever, how the CM has to behave and all those things and everything. It can change in future with the state government. The new government who has been sitting can change a lot of things in the legislative act. उसको डेट डालेंगे 2023. This act can change because this act, the legislative people have powers to change this act. So they can change many things in this act. But it doesn't mean if this act changes that the DOJ cannot overrule it. Because if the act changes, then any citizen can challenge it in the court basically on the principles of the constitution. They can challenge it in the terms of PIL or REIT. They can challenge it. And the DOJ can say, okay, whatever they have put new thing, we upheld it, or the DOJ will say, no, it is not with the ethos of the constitution, so this cannot be done. So it will repair to the old act. So that all those things, DOJ will uphold all those things. Now the third document, that is this one, what we are talking about, the Election Commission Handbook. This will not change. This cannot change at all by the state cabinet. This can only be changed by the governor. Only governors can change these things, all this. Not even the DOJ will not touch anything. DOJ only will interpret these things if the election commissioner will do something wrong in his duties or in his this. That time the DOJ will look at this book and try to interpret those things and tell him he has done wrong or not done wrong, whatever it is. Now in this, we have to, one more thing we have forgotten in this, wait. We have forgotten how election commissioner can deny a nomination. That we have not touched. We have to put that also. Or ताओ ये इधर आ गया ना model code of conduct. नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वो हाँ क्या बोल रहा था बोलो. ये C वाला हो गया ना, candidate contesting elections have to fulfill the criteria laid down in the model code of conduct by the election commission. If the criteria has not been fulfilled, then the application is rejected on its own. No. Now that's the whole idea. No, that is okay. That is for election commission. On that he will reject it. But if that guy comes to court, how will the court accept it if it is wrong what election commission has done? So there has to be defined first on what criteria the election commission can reject a form. Only that is the power we have to define. Others we don't have to. Only that power we have to define. So for that power, on what basis can an election commission reject a form? Let's think about it. Priors against the government, against the state, like attempted murder of a government employee,
No, conviction is happened. If conviction is happened, then he has already fulfilled criteria of convicted. If his conviction is going on, then we can get a rule. Oh, his trial is on, and he gets convicted. We can introduce expungement, right? Nothing like that. It's a simple logic is if he has already finished his conviction, then that will he will only have to declare it, might be in his form, okay, but it will not affect him of his candidature. Is affecting of his candidature Yeah, will, yeah. effecting of the candidature will only come if the trial has been going on that time, or he's been convicted after his nomination has been accepted. Oh no, sorry. Only if he wins the election. Sorry, not accepted. It's only after he becomes a CM or whatever. He takes a state whatever authority, opposition leader or whatever it is. He becomes a member of the legislative assembly, and that's the time when he gets convicted with certain charges which we have to define. Then he's been removed from the office and might be not able to contest the next term also. That we can We can add in that 15 days of or the 2 weeks of no crime. The candidate must not commit to a crime for past 2 weeks before he's filing for the election. Okay. 2 वीक का ये वो ले लेते हैं ना ओके ओके प्रोबेशन ओके पीरियड, ओके तो ओके एक वहाँ पे ओके उस बंदे की भी एक आरपी हो एक जाती है. मिनट एक मिनट, ये याद रखो, आपने बोला है वो याद रखो, पर उससे पहला और एक चीज करना है. ऊपर जाओ, वापस ऊपर जाओ टू द डॉक्यूमेंट ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट का डॉक्यूमेंट है ना, सेक्शन 5, उधर एक सेक्शन 6 करो. ओके, गिव मी अ सेक. ये तो क्या नाम है? सेक्शन 6 करो. सेक्शन 5 कैबिनेट है ना, सेक्शन 6 और एक करो. उसके नीचे सेक्शन 6 कर दिया. नेक्स्ट पेज सेक्शन पे आ गया 6. थोड़ा. ओके, सो सेक्शन 6 में लिखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ कन्विक्टेड. नहीं, ये इसकी हेडिंग ये क्या होगी? क्रिमिनल ये बरो लिखो, क्या बोलते हो, क्रिमिनल सस्पेंशन लिखो. वो इम्पीचमेंट में नहीं आ गया? नहीं, इम्पीचमेंट नहीं करते. इम्पीचमेंट रखते तो मजा आएगा उसकी. इम्पीचमेंट के कोर्ट ट्रायल्स हो गए. इम्पीचमेंट नहीं, कोर्ट को अधिकार नहीं है इस पे. कोर्ट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट्स नॉट दिस इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस. दे आर इलेक्टेड, उनके वोट्स दिए. ही कैन चैलेंज हिज डिसीजन लेटर इन द कोर्ट. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लिखो, नहीं तो conviction, sorry, criminal convictions, proceedings nahi, convictions. Okay, a person elected and holds a legislative authority in the legislative assembly, holds a legislative authority in the legislative assembly. एक सेकंड. In the legislative assembly is convicted. कौन सा वाला डालेंगे अभी वो बताओ. Firstly, which charges we should be? felony. नहीं, felony बहुत छोटा होता है. felony रखो. felony above certain months होना होता है. heinous felonious crimes कर देते हैं ना. वो कैसे against the state. एक तो हो गया अपना against the state हो गया. स्टेट एम्प्लॉय स्टेट हो गया. MDW ओपन कर कोई सिटी में, तो वो देखो कौन सा कैटेगरीज है, वो देख सकते हैं हम लोग, उसके हिसाब से करेंगे. ये अपने एक सेकंड था, आपको मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ. इसके अंदर पीनल कोड है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ना, पीनल कोड. हाँ, भेजो. ये किस लिए, लाइक आफ्टर विनिंग द इलेक्शन इफ दे डज एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी? या उसके लिए. I'll send you the document of penal code. Offenses against criminal offenses, offenses against person, offenses involving theft, fraud, offenses against public administration. ये ऐड कर सकता है. Assembly is convicted for offenses against public administration.
ऑफेंसेस अगेंस्ट लिखो यहाँ पे। पब्लिक, आप जस्ट लिखो उधर ऑफेंसेस हाँ। अगेंस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, बाद में कॉमा डालो। पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों बस है। टेररिज्म। नो वो तो रेड चार्ज में डायरेक्ट डिफाइन करेगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक ऑर्डर विच फॉल्स अंडर फेलनी, under felony and capital punishments। बस है, वो टेररिज्म सब कुछ ऐड हो गया इधर। Terrorism is under public order, it will come to, but it's a capital punishment, so it's directly added into that. So these are okay. A person elected and holds a legislative authority in the legislative assembly is convicted of offences against public administration, public order, public administration and public order dalo, and public order which falls under felony and capital punishment will be disqualified and वो भी डालेंगे that he won't able to contest one next immediate, नहीं वो नहीं डालेंगे, वो चलो will be disqualified, नहीं बताओ उसको will be टाइम देंगे disqualified थोड़ा वो। and a fresh election will be conducted for the vacant position। डन। अभी वापस नीचे जाओ, जो आप बता रहे थे उधर जाएंगे अभी वापस। इधर और एक पॉइंट ऐड करो, इधर आई इसके कि आई के बाद और एक, सॉरी क्या है, वन एल के बाद और एक पॉइंट ऐड करो। इलेक्शन कमीशन the election commission also holds the authority to conduct an election for any vacant legislative position। लेजिस्लेटिव legislative position। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया, क्योंकि ऊपर जो कैबिनेट के अंदर लिखा हुआ है कि द कैबिनेट विल हैव एटलीस्ट एक्स नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड विल बी डिफरेंट है, डिसाइडेड। कैबिनेट डिफरेंट है, हम लोग लेजिस्लेटिव मेंबर्स का बात कर रहे हैं। उसमें आएगा सीएम और उसमें आएगा 2 ऑपोजिशन जो होंगे वो आते हैं अच्छा उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। कैबिनेट में कोई इलेक्टेड नहीं आ रहा है अभी तक, हम लोग को डिसाइड नहीं किया, पर हम लोग ने ये सोचा था कल कैबिनेट सेलेक्टेड होगा। कैबिनेट बोला तो जो सीएम बनेगा वो अपने 2 बंदों को हाँ, वही सेलेक्ट लगता था। करेगा। अगर कल समझो सीएम ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसका कैबिनेट भी गया उसके साथ, क्योंकि नया जो सीएम का इलेक्शन होगा उसमें वो नया सीएम जो आएगा वो अपने 2 और बंदे को हायर करेगा उधर। सो दैट वी डोंट हैव टू डील विद दोस 2 गाइस, बट दिस इज आल्सो डीलिंग विद द अदर ऑपोजिशन गाइस। जो ऑपोजिशन लीडर होंगे और उसमें जो होंगे 2 ऑपोजिशन लीडर ये होंगे, लेजिस्लेटर्स होंगे, वो ऑपोजिशन लेजिस्लेटर अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो उसका भी पोजीशन फिल करना है, तो इलेक्शन होगा वो पोजीशन के लिए, सीएम के पोजीशन के लिए नहीं, वो पोजीशन के लिए होगा। जी। और ये ऑपोजिशन की पावर क्या होगी? उसका ऑपोजिशन की पावर अभी डिफाइन नहीं की। उसका कुछ पावर नहीं, वो अभी ऊपर डिफाइन करना है बहुत। उसका पावर कुछ नहीं लेजिस्लेटिव, उसका पावर सिर्फ है कि वो ही कैन बी पार्ट इन द, से वोटिंग होगा सब बिल्स पे कुछ भी, तो उसका भी वोट मायने रखेगा, बट ही माइट नॉट विन द वोट एवर, but he will be always, he will have his time, because we are introducing speaker, then if you are introducing speaker then there will be debates, so he will have his own time to debate on contrary of that legislation. He can go and also talk to media, campaign around the city, whatever it is against that, so whatever it is, so his job is only to oppose the things which are not okay for he, according to him, which should be implemented in the city. कल उसने समझो बजट प्रोविजन में टैक्सेस को इंक्रीज किया और डिक्रीज किया कहाँ भी,
अगर ऑपोजिशन लीडर बोल रहा है नहीं ये अच्छा नहीं है स्टेट के लिए, इतना पैसा आप डिक्रीज कर रहे हो, लॉस में जाएगा स्टेट, नहीं तो वो बोलेगा ज़्यादा टैक्सेस है, ये लोगों को आप ज़्यादा तंग कर रहे हो, वो सब उसका साइड से आएगा, ऑपोजिशन की साइड से। उसका एग्जीक्यूटिंग पावर्स कुछ नहीं है, पर उसके पास ये है क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्ररी व्यू डालने का सिटीजन्स का, उसके पास वो पावर है असेंबली में। Yes, so this is done. What you were telling now, tell us that about this, what you were talking about, what we were talking. I told you to remember what you were saying. See, Yeah, I was saying to give at least how do you say, to give at least 2 weeks of probationary period of them not conducting a felony crime regarding okay, of the crime against 2 weeks might be too against much, no? Let's whoever give it is. 7 days only. I think 2 weeks is too much, like No, 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 because sir, 2 weeks. we Sir, don't वहाँ have पे 2 मजा weeks. यही तो आएगा ना, We 2 weeks don't. होगी ना, आरपी मजा आएगा We उधर। don't have 2 weeks. Oh yeah, starting By the for आगे by वाले the उसकी time we will election के लिए declare आप कर this सकते हैं। document, we have to have election in the coming week only. It's only thing 7 days will be there for the person to conduct. So we don't have to. 2 weeks is too much. City has reached too far. It's इस 6 वीक के months. लिए, So it's या 1 इस week. वीक के लिए कर लेते, या So you can write 7 days prior. You should have no certain kind of charges. Again, I think so only those charges: public order and felony and all those things. Public order and public this. So you can add that. A nomination can be rejected. We were actually writing how can a nomination be rejected by the election commission. So write there. A nomination can be rejected by election commission on certain terms defined under. So आप सब bullets करके A B C D करके उसमें डाल सकते हो. So that tomorrow if it is not rejected on those bullets, then the DOJ can overchange the decision of the election commission and accept that nomination. So वैसा करो. Just write KLMN लिखो, N में लिखो, N. बोलो तो। Okay, the election commission can reject nomination on the laid down criteria बोल के लिखो, below, laid down criteria below. अभी इसमें सब बुलेट्स करके ए में वो डालो कि आपका 1 वीक का criminal. सब बुलेट करके ये डालो. हाँ वही। लोकेश है इधर, लोकेश. जी बोलिए। लोकेश छोड़ो, है अभी आप तो उधर सही ही है। पहला आप लिखो वो वाला जो क्रिमिनल का जो आप बोल रहे थे वो 7 days का वो लिखो. फेलनी और स्लैश कैपिटल भी लिखो. एनी क्राइम ना कर दो सर। नहीं, एनी क्राइम नहीं हो सकता है क्योंकि एनी क्राइम बहुत इरिस्पॉन्सिबल होता है. तो कल आप उसको चालान मारेंगे आपका पुलिस और बोलेगा क्राइम किया है बोल के. फेलनी भी डिफाइन होना मांगता है, कौन सा भी फेलनी नहीं होना मांगता है. आई थिंक द फेलनी हैज़ टू बी डिफाइंड ऑन दैट सेम थिंग व्हाट वी आर डिफाइंड ऑन टॉप, पब्लिक ऑर्डर एंड दिस गवर्नमेंट दिस, नॉट ऑल फेलनी क्राइम्स. एक सेकंड ऊपर देखना तो क्या लिखा था। We had said it, public administration and public order. Yeah. So you add that only. दिस इज गुड। Yes. Second point में आप लिख सकते हैं ये वाला कि the candidate must fulfill all the criterias
given in the model code of conduct during the filing of the nomination. अगर वो नहीं किया है उसने तो भी रिजेक्ट हो सकता है उसका फॉर्म. जैसे इमेजिन उधर बोला था कि 5 सिग्नेचर मांगता है विटनेसेस की और वो 5 सिग्नेचर में 2 फॉल्ट मिला सिग्नेचर में तो भी रिजेक्ट हो सकता है. और द नॉमिनेशन The candidate must fulfill all the criteria given in the model code of conduct or the nomination will be rejected. विल भी नहीं, कैन बी रिजेक्टेड. वो वापस डिस्क्रिशन है इलेक्शन कमीशन का कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है उसको. सो कैन बी रिजेक्टेड. थर्ड, और अभी सोचो और कैसे रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म किसी का. फ्रॉस्टी एनीवन? let me think. सोचो. एनीवन एल्स गाइस? चैट में किसी को देना है आइडिया? वही अगर के नॉमिनेशंस लिए गए हैं और समथिंग लाइक दैट, आई मीन एनी काइंड ऑफ लेजिटिमेसी अगर नहीं दिखा उस नॉमिनेशंस में. नहीं, वो कैसे डिफाइन करेंगे लेजिटिमेसी? व्हाट विल दैट विल बी लाइक अगर किसी को पता चले, अगर इलेक्शन कमीशंस को पता चलता है कि द नॉमिनेशंस और समथिंग were given by any kind वो of मोड ऑफ monetary कंडक्ट help. के अंदर नो आ दैट जाएगा वो ना. उधर आएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सेकंड पॉइंट में आ गया वो. हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया वो सेकंड पॉइंट में आया. विदाउट थिंक समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द बॉक्स. जैसे समथिंग व्हिच हैज नथिंग टू लाइक वो वायलेशन ऐसा है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी कवर अप नहीं हो रहा है और क्रिमिनल इसमें भी क्रिमिनल एक्ट में भी नहीं हो रहा है. बट स्टिल वो ऐसा है चीज जिससे अगर उसने किया है तो उसको एक्चुअली कॉन्टेस्ट नहीं करना है सिटी में. नहीं. बैंकरप्सी तो नहीं कर सकते. बैंकरप्सी फिर एक अलग नहीं कर आरपी हो सकते. जाती है. बैंकरप्सी को नहीं. फाइनेंशियल साइड कैन नॉट. अब गरीब आदमी भी बैठ सकता है, रईस आदमी भी बैठ सकता है. वो आरपी भी मजेदार होगी ना अगर गरीब आदमी इलेक्शन जीत जाता है और a bankrupt person. It's like we are giving avenues to If the every candidate is RP to absconded. explore that. The candidate is absconded. वैसा थोड़ी होता है. कैंडिडेट absconded हुआ तो नॉमिनेशन कौन करेगा? नहीं. सोर्स ऑफ इनकम मंजुनाथ विल कम इनटू द मॉडल ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके बैंक में कितना पैसा है, उसके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब करप्शन करेगा कल बाय मिस्टेक ही डज करप्शन and then that time the income tax department or any other department can raid him and say that you declare how you got this money. So वो लोग उसके इलेक्शन नॉमिनेशन को देखेंगे कि उधर उधर क्या डिक्लेयर किया था उसमें, उधर से आज तक इतना पैसा कैसे मिला, उसका सैलरी तो इतना ही था, तो इतना पैसा कहाँ से आया. ये वो भी उस तो टाइम लिख पे सकते लगता है. हैं. Not now. Candidate must not be convicted for corruption. नहीं, वो कन्विक्टेड बोला तो ऑलरेडी आ चुका है ना. क्रिमिनल फेलनी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया ना. करप्शन उसमें ही आता है ना. Public administration है. Because end of it, corruption is only when you are attached to a public authority. You are two individuals, civilians cannot do corruption. That they can do forgery. हाँ, और एक डालो. The candidate cannot hold any government job during the candidate cannot hold any government or semi-government post during the nomination, during the time of the nomination. He or she has to resign and have a NOC. Resign and have a NOC from the concerned department head where he or she was employed. Okay.
दैट्स अ राइट गौरव, दैट इज अ प्रॉपर लाइन, बट व्हाट हैपेंस, उनको समझेगा नहीं वो आरपी में पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं उसको, वो नहीं समझेगा उनको, वो छोड़ो, ये बेस्ट है, क्लियर समझेगा उनको. ओके, एनीथिंग एल्स यू ऑल हैव टू थिंक और देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिस आर. क्रॉसशेयर अपना पीनल कोड में करप्शन का चार्ज नहीं है क्या? इम्पीचमेंट है. वो मेयर का होगा. करप्शन का चार्ज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी कैन ऐड इन No, करप्शन no, बिकॉज़ ये corruption is चार्ज not है ही नहीं allowed. अपने No, फंड. corruption is not allowed for anyone. करप्शन का चार्ज मतलब करप्शन का कैसे चार्ज होगा? लाइक मतलब करप्शन, No, no, देयर corruption. इज नो What सच he's कट. saying, no, no. What he's saying is the government department corruption उसका charge होना, but government departments are not allowed to do corruption, right? It's a server violation. Now these guys do financial corruption. That is the guys who win mayor election and all this, they win finance. They do financial corruption in main server. So the charge is for that, for them to impeach. Then they impeach them. So because he has done some gocha in the state treasury, वो उनकी आरपी है वैसा. हम लोग का थोड़ा रीडिफाइनिंग करेंगे, हम लोग सेम होगा पर हम लोग का सीएम के इधर होगा, पर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस वैसा नहीं होगा. देयर विल बी इन्वेस्टिगेशन अगेन बाय अ डिपार्टमेंट हु इज अलाउड, कैन ओनली दैट डिपार्टमेंट कैन डू इट. So we'll keep it like this, that department has to do the investigation under the supervision of DOJ. So they can do investigation. Imagine there are some charges of chief minister coming that he's doing corruption. He's taking money from people or he's siphoning the state funds. Then the DOJ with that department can do an investigation on that this person and prosecute him with that same charge, which is impeachment. Now that charge automatically will come into this point, right? The candidate must not commit not discharge on top, which we have already said that if you are in an office and if you have been convicted for those crimes, okay, public order and the other one, all this felon thing, so then the impeachment thing will come for him. No, that is, he will be removed indirectly. He will be removed from the office. तो जो कैंडिडेट के सपोर्टर होंगे वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए ना? Data Sai Hindi, thank you very much. हाँ, क्या क्या? जो कैंडिडेट को वहाँ पे वाउच करने आएंगे कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ. ऑफिशियल साइन करने, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए ना? वो भी ऐड है. नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय. उधर जाओ, वापस जाओ. कहाँ है वो नॉमिनेट, किधर है वो ऊपर लिखा था ना, उसका टर्म एक किया था ना हम लोग विटनेसेस का, उधर लिखना है. हाँ, ऊपर जाओ. A witness is a person who guarantees the candidate of a person. He or she should be. पीपी एक बार लिखना, मैं आ रहा हूँ खाना लेके. हाँ, पीपी थोड़ा ये करो. He or she should not be holding any government / semi-government jobs or whatever employee. He cannot be employee of that. Reasons of impeachments are normally financial reasons, but that is for main server. For our server, it's not only financial, it's also crime. But there it is only for mayor. Here it is for all the guys who are elected, who are sitting. That are those 3 or 4 guys who are elected. 3 guys or whatever. Those one speaker, one CM, and the other 2 guys. Opposition or whatever, one opposition. But then there's a small problem here. The nominated guys of the CM also will hold the legislative powers. So they also should be coming into this. क्योंकि उनके वो लोग भी अभी मिनिस्ट्री होल्ड करेंगे. So there has to be changes there also. If we are allowing a chief minister and 2 cabinet minister, then I think these 2 cabinet ministers should be also should be also been once they are appointed by the CM, they automatically become a legislator. So they will be also coming under the same document after that. Even they are caught for any criminal activities or whatever, they will be removed from that post. नहीं तो हमको उसका भी, उनको भी वोटिंग से ही लाना पड़ता है वो. आई थिंक नो, माई बेस्ट आइडिया टू इज ओनली 2 पीपल, एक सीएम और एक मिनिस्टर उसका सीएम का. ओके, so we can directly say one CM and deputy CM or 2 whatever, these 2 people we can make, and 1 leader of opposition and 1 speaker. So all these 4 guys should be yeah. ऐसे 2 बंदे ना काफी कम हो जाते हैं क्योंकि कई बार होता है कि भाई दोनों बंदे आरएल बिजी हो गए.
नहीं वो या हम फिर लोग टाइम का ऑलरेडी इशू डील हो किया है, गया? आईआरएल का डील किया है। जब वो आईआरएल बिजी हो जाएगा तो गवर्नर ये करेगा, डिक्लेयर करेगा वो ये हुआ तो न्यू लोगों को नहीं, बुलाएगा। आज से 5 है शी इन द नॉट इलेक्टेड ना ना गवर्नमेंट ना। मजा आएगा ना, क्योंकि जब होता है देखो मजा आने ज्यादातर का बंदे बात नहीं, कितने हम आते हैं, लोग ने 6 बजे कल के इस बाद पे आते हैं बोर्ड, ना। कल का स्ट्रीम देखो आपको मालूम पड़ेगा। वी हैव डिबेटेड दिस अ लॉट, व्हाई व्हाट आर द माइनस अच्छा। पॉइंट्स फॉर ऑल दोस थिंग्स, वी हैव ऑलरेडी डिबेटेड दैट। हम्म। We have to fit this whole thing, speaker, opposition, and this. We have yesterday thought that we will fit it in five people only. All these things only within the 5 people, but then we had decided only 3 will be elected. Sorry, 3 will be elected and 3 will be selected. It means the CM who gets elected will be the highest voter, who gets highest vote. He will select 3 guys of his. That is 2 ministry guys and one. Sorry, two ministry guys and 1 speaker. And the other 2 other guy who is on the other side, 3 4 5, yeah, the other guy, 2 guys or 1 guy will be the second and third voter who got votes. Oh, we will keep it this way now is we want to make it more smaller. Starting में अभी सब small होगा और next election में हम लोग बढ़ाएंगे. Lisa, thank you very much. So starting में हम लोग ये भी कर सकते हैं is that only CM and one CM, 1 speaker and 1 opposition. Sorry, 1 CM, 1 minister for him, 2 guys, 1 speaker and 1 opposition. So 2:1. The ratio in the assembly is 2:1 with 1 speaker as a adjudicator. So this is how we will work on. So I think all this only thing is speaker and the other guy who is there has to be right now for this election should be selected by the CM. Next election we are going into might be thinking about political parties. If it is political parties, then yes, then we will tell them to put their candidates in such a way like each political party will have like 2-3 guys winning. So if there are 3 guys win, then they run the state government. Then it will be on the ratio, not on the first and second guy. It is on the total number of how many candidates there is one in the city. That political party will make the government. That is the next election we are thinking on, because for that we have to think on a lot of other things. Is the ratio of who will be the political party, who can be registered as a political party in the city. All those things will come as a question which we have to deal with the first election. So उसके लिए वो छोड़ो, अभी उसका बाद में देखेंगे. अभी क्या हुआ है जनरल. So this most of the document is completed. Okay, this one also is completed. How he can be removed. और ऐड करना है तो ऐड करेंगे. जो भी जहाँ भी ऐड नहीं किया है. पर लेट्स गो ऑन टॉप अगेन. जस्ट लेट्स गो बैक ऑन टू the first the state legislative law. Okay, so in that we'll have to do some cabinet. Go in section 5. A cabinet is a council of high-ranking officials who are appointed by the chief minister to advise and oversee the administration of the government. The cabinet will have at least one X number निकालो, one member. Okay, one member. At least वो निकालो. A cabinet will have one member appointed by ये डालो. So let's redefine it. A cabinet is a council of high-ranking officials. नहीं. A cabinet is a council of high-ranking official. S नहीं है उधर, क्योंकि एक ही है official who is appointed by the chief minister. Who are है उसको is करो. Who is appointed by the chief minister to advise and oversee the administration of the government. Okay, done. और फिर तो कैबिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं. We can even या जो not उसको put बनाना cabinet बनाए. this time and we can just make a deputy. But deputy chief minister, yes. I will say that we will not put the cabinet this time. We'll keep only deputy chief minister. Cabinet हम लोग next time ही करेंगे. So deputy chief minister already define हुआ था ना ऊपर, उसको वापस ऐड करो. हाँ, वो मैं कॉपी कर दूंगा. कॉपी करो उसको वापस और उधर डालो. उसका पहला क्लियर करें, बाद में स्पीकर का क्लियर करेंगे रोल और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्लियर करेंगे. मैं इसमें पहले आपको डाल के दिखा रहा हूँ. ये लिखा था मैंने.
A deputy mayor is Okay, an just elected or second. appointed official who is appointed. कहाँ गया? वापस दो. एक सेकंड हाँ डालो ये था A deputy mayor is an elected or an appointed official who serves as the second in command to the mayor. ये निकालो. The deputy mayor, mayor's नहीं, S निकालो, mayor रखो, is appointed. डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गया ना आपका हाँ, chief minister. मेयर So भी नहीं होगा deputy chief चाहिए minister is elected. वो निकालो. Deputy chief minister is appointed. इलेक्टेड और अपॉइंटेड हाँ इलेक्टेड Elected निकालना है, appointed रखना है. Is an appointed official who serves second in command to the chief minister in the state government. The state government, okay. The deputy chief minister role may vary depending on the specific granted by the position by the mayor's preference. Yes, by the chief minister's preference. May vary depending on the specific powers granted by the deputy chief minister's role name. The deputy chief minister's ministries. ऊपर जाओ वापस. The deputy chief minister's ministries role को निकाल के ministries कर लो. मिनिस्ट्री कर दो ना हाँ मिनिस्ट्री नहीं मिनिस्ट्रीज करो क्योंकि 2 मिनिस्ट्रीज भी दे सकता है उसको क्योंकि हम लोग 3 मिनिस्ट्री फॉर्म करेंगे may vary depending on the depending on वो specific powers granted to the position by the chief minister's preferences. Okay, वो रखो ऐसा है, no problem. The deputy chief minister acts as a representative of the chief minister. Mayor निकालो of the chief minister may be responsible for carrying out special duty on overseeing an aspect of the city administration. This may include attending meetings, the mayor managing city services or serving as और नीचे जाओ और city services और services as a between chief minister and other officials. नहीं वो नहीं मांगता है वो निकालो पॉइंट मैनेजिंग सिटी सर्विसेज से वापस लिखने को स्टार्ट करो मैनेजिंग सिटी सर्विसेज ब्रैकेट बाद में और क्या क्या हटा दो ना जितना भी है नहीं वो मत हटाओ अभी सिर्फ लिखो अटेंडिंग मीटिंग्स ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर मैनेजिंग सिटी सर्विसेज हेल्पिंग चीफ मिनिस्टर नहीं वो मत डालो हेल्पिंग चीफ वो आ मिनिस्टर गया सर वो तो आ गया ना ऊपर एडवाइस करता है वो हाँ वो हेल्पिंग निकालो पॉइंट डालो उसके बाद पॉइंट डालो बुलेटिन पॉइंट नहीं नॉर्मल पॉइंट डालो सर्विसेज के बाद बंद करो स्टेटमेंट को मैनेजिंग सिटी सर्विसेज पॉइंट डालो वो कॉमा निकाल के पॉइंट डालो ओके ओके ही विल बी ऑल्सो having will be also having power to vote and debate on any new legislation or bills introduced in the state assembly. Point. अमेंडमेंट्स भी इसमें ऐड कर दो सर Legislation amendments इसमें कुछ भी डालो amendment भी डाल separate. It is in the state assembly. Point. He will also be termed as a legislator. He will be also termed as an appointed legislator. In the assembly, appointed legislator in the assembly, and will be prosecuted
Under section 6, under section 6, of State Legislator Act 2023 ऑफ द सैक पे रहेगा सर. of this act. Okay, done. तो कैबिनेट हटा दो ना पूरा. अभी और ये नीचे वाला निकालो, जो भी है. अभी नीचे वाले नहीं मत हटाओ, अभी वो नहीं मत हटाओ, मत रुको रुको. और सर्विंग निकालो उधर से, पहला ये निकालो, रुको मेन निकालता रुको. कैबिनेट हटाओ पूरा. नहीं रुको एक मिनट. In some cases, the deputy chief minister may also serve as acting chief minister in absence of the chief minister. को मेयर निकालो. Absence of the chief minister, or if the chief minister unable to perform his duty. नहीं नहीं. सेकंड वाला नहीं. हाँ उधर चीफ मिनिस्टर लिखो. मेयर है उधर चीफ मिनिस्टर लिखो. Only approved by the sitting chief minister. Can be only approved by the sitting chief minister and should be negotiated, should be communicated to the governor. Okay, done. ये हो गया. So section 5 में कैबिनेट है, वो पूरा निकालो कैबिनेट का अभी. सेक्शन 5 रखो पर कैबिनेट निकालो. सेक्शन 5 रखो पर कैबिनेट निकालो. कैबिनेट निकालो. नीचे जो लिखा हुआ है ना कैबिनेट. हाँ वो निकालो. और ऊपर का कैबिनेट, जो कैबिनेट लिखा है उधर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लिखो. अभी उसको डिफाइन करो. लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वापस डिफाइन करना है. ओके ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, वापस ऊपर जाओ, ऊपर जाओ. ऊपर ना दो डिस्क्राइब करना है. 10 और 11 में डिस्क्राइब करो. 10 में लेजिस्लेटर को डिस्क्राइब करो पहला. नहीं वो 10 में मत करो, वो 3 में भी करो. 3 में मेंबर इन रिलेशन टू कॉर्पोरेशन मीन्स अ लेजिस्लेटर. नहीं उसमें ये लिखो लेजिस्लेटर लिखो. मेंबर को निकाल के लेजिस्लेटर लिखो. अ पर्सन हु हैज इलेक्टेड लेजिस्लेटर के आगे क्या लिखना है? द पर्सन, ऐसा लिखो. द पर्सन हु हैज, द पर्सन इन रिलेशन. ने वो पूरा सेंटेंस निकालो लेजिस्लेटर को. लेजिस्लेटर का वो इन रिलेशन सब कुछ निकालो. द पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड means the person who has been elected or nominated by the person who has been elected by the election, by the election process. तो बाय की जगह वीआई लिख देना. Elected via election process में भी लिखना नहीं है. means the person who has been elected, or directly लिखो, और ये or the person who has been selected by the chief minister. बाय द चीफ मिनिस्टर. अभी उसके नीचे ना और एक पॉइंट लिखना है आपको. लीडर ऑफ ऑपोजिशन. चीफ मिनिस्टर को डिफाइन किया है ना हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी. या सो अभी आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये करना है. नीचे जाओ, लास्ट में जाओ. 10 में करो. 10 में, हाँ 10 में करो. लीडर ऑफ ऑपोजिशन. अ पर्सन हु रिसीव्स सेकंड हाईएस्ट वोट्स. एक मिनट तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना. हाँ the person who has person who receives second highest votes in the state election. जी ओके अभी नीचे जाएंगे वापस. लीडर ऑफ ऑपोजिशन को डिस्क्राइब करेंगे. ओके
Okay. नहीं उससे नीचे. A leader of opposition is a person who holds a legislative position in the state legislative assembly. Who holds? The legislative position holds holds a legislative हाँ वो position. change हो जाएगा. Holds a legislative position in the state assembly. His duty is to debate vote in a his duty is to debate vote on any introduced legislations, bills or amendments. Vote on any introduce. ये ऊपर वाला हो गया ना पूरा. Legislation, bills and amendments. Okay. जी तो. Okay. उसको भी वही ऐड करो. He will be also termed as appointed legislator in the assembly and will be prosecuted under section 6 of this act. वो कॉपी पेस्ट करो ऊपर का. Okay. ये हो गया. लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कंप्लीट हो गया. अभी सेक्शन 6 करो. ये सेक्शन क्रिमिनल कन्विक्शन सेक्शन 7 रखो. सेक्शन 6 में स्पीकर का डेफिनेशन करना है. तो हमको अभी ऊपर जाके वापस स्पीकर का डिफाइन करना है पहला. वो प्रोटेस्ट भी उसका राइट है गौरव. दैट इज लेट स्पीकर डिसाइड ऑन दैट. दैट्स ओके. बट दिस आर द मेन टू थिंग्स. व्हाट आर हिज थिंग्स. स्पीकर ऊपर जाओ वापस. हम लोग स्पीकर को डिफाइन करेंगे. Speaker means the person who's been appointed by the chief minister to be the adjudicator Okay. एक सेकंड मेरा डॉक्यूमेंट चेंज हो गया. To be the adjudicator. अभी लिखो आप. Speaker means the person who has been appointed by the chief minister to be the adjudicator in the state assembly, state legislative assembly. In the State legislative assembly. बैक हो गया तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट. ओके हो गया ये. अभी नीचे जाएंगे. जी. स्पीकर पे जाएंगे. अभी कहाँ गया वो स्पीकर. और एक पॉइंट. सेक्शन 6 स्पीकर. A speaker is a person appointed by the chief minister who will see the proceedings who will oversee the proceedings in the assembly. It is his duty to keep the house in order and a discipline is maintained. He do not have any powers of voting, neither any say on new legislation, bills or amendments. Okay.
It is a ceremonial post. It is a ceremonial post. A ceremonial post without नहीं वो मत लिखो ज़्यादा डिटेल वो बाद में करेंगे. इट्स अ सेरेमनियल नहीं, पोस्ट ही लिखो. हाँ. इतना ही लिखो, नहीं तो वो निकालो, वो भी निकालो. इतना ही बस सेरेमनी, वो पूरा निकालो, पूरा लाइन ही निकालो. The speaker cannot reject which is been passed by the chief minister or deputy chief minister in a form of voting. He will always नहीं he will always मत निको, ये ज़्यादा ही होगा. We will put it this way: the speaker will be advised by the chief minister when to have the state assembly sessions. He is the authority to lay down the itinerary of the proceedings during the house sessions. हो गया, स्पीकर भी हो गया. सो ये तीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ दैट वी हैव कंप्लीटेड. इसमें और भी हो सकता है इन फ्यूचर में. समथिंग विल बी दिस दैट साइड, एवरीथिंग विल हैपन, बट मोस्टली वी हैव फिनिश्ड ऑन द स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट. वी हैव फिनिश्ड ऑन So I'll be back in 2 minutes. या Hey, buddy. election commission handbook we have finished. Now we have only left with, I think, model code of conduct. Only that is left, but that model of code of conduct I don't want to do it openly here. That is better. Who will be the election commissioner, उसके ऊपर से बाद में बैठ के we can do that, guys. Now you guys have any extra thing to tell me, then please tell the chat what we did just now to add anything there. Everything is okay in the state. जो अभी किया हम लोग ना, sections, speaker, leader of opposition. So now we have decided that there will be only 4 people in the assembly. There is one CM, one deputy CM. Both of them, the CM will give the ministries. So there will be 3 ministries. Okay, we have to write about the ministries. So we will decide only on 3 ministries. What is Ministry of Finance, Ministry of Internal Affairs, and Ministry of what do you call it? Which are the one we had said last time? Emergency, we can say health. Minister of Health we can keep. So these 3 ministries will be there. So these 3 ministries, the chief minister can give him 1, hold 2, or give him 2, hold 1. That is up to him. So these are the 3 ministries they will work with, the 2 guys. The opposition, leader of opposition will always have the contrary view on all the things what they will get and everything. And the speaker will try to balance the whole thing and run the show. So the voting, whenever every new thing will come, there will be voting. So the voting will be put across in the assembly, and both the side will vote. The speaker doesn't ever vote. नहीं, स्टेट स्पीकर भी उसका ही राइट है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के आया है, तो उसका ही राइट होगा उसको इलेक्ट करने के लिए. सी गाइस, डोंट टेक इट सीरियसली. द गाय हु विंस द इलेक्शन, ही शुड हैव द मैक्सिमम राइट्स ऑन थिंग्स, बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वन द इलेक्शन. He won the election, then he is the ultimate power. He should be deciding on how he has to run and give services to the people. So दूसरों को उधर मुंह नहीं डालना है. जब वो रॉन्ग करेगा, उसका चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं. उधर गवर्नर भी है और डीओजे भी है,
जो उसको ये करेगा, और जो भी वो पास करेगा वो जाएगा डीओजे में. Or might be it will go to the governor, and the governor will finally sign on it if it can become a law of the city or bill of the city. वो पहला नहीं होगा, वो डीओजे नहीं तो गवर्नर चेक करेगा और वो देखेंगे अगर वो सही चल रहा है सिटी के लिए तो ही वो लॉ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. No, Narayan, I'm not advocate. I have nothing to do with law. Yeah, I have something to do with law creation, but no, not law interpretation. Yeah, that's where I come. हाँ, anyone else want? Okay, हम लोग को और एक चीज डालना है. Shrey is in go on top. Just define another thing on top is act contents and interest sections. Speaker डाला भी 12th में जाओ. Okay. हाँ जी. 12th में मिनिस्ट्रीज लिखो. मिनिस्ट्रीज. द मीन गाय द पॉलिटिकल पार्टी का इस बार नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे बोला है ना, इस बार नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, इस बार इंडिविजुअल होगा. मीन्स देयर विल बी, ऐसा ही डालो, मीन्स 3 मिनिस्ट्रीज. नहीं ऐसा डालो, मिनिस्ट्रीज मीन्स departments means departments. Ministries. इसमें Yeah. the departments allotted by the governor to the legislative to the government. To the government, हाँ वैसा लिखो. और बाद में नीचे एक सेक्शन करेंगे मिनिस्ट्रीज का. ओके, सेपरेट. मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट तुषार. एनवायरनमेंट का मिनिस्ट्री करेंगे तो क्या करेंगे, सबका ये डीजल व्हीकल निकालना पड़ा गाड़ी सीधे से. नो गौरव, दैट इज रियल लाइफ. रियल लाइफ में वो डिफरेंट होता है, इधर कंप्लीट डिफरेंट है. रियल लाइफ में गवर्नर को कैबिनेट बताता है कि कभी असेंबली रखना है, वो उसको ये करता है. पर इधर वैसा नहीं है. इधर गवर्नर is not a RP player, he is the manager of the server. डाला मिनिस्ट्रीज डाला, यू हैव सेक्शन इसमें डाला आपने मिनिस्ट्री रिवर अलर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट. अभी नीचे जाओ, सेक्शन चेंज करेंगे हम लोग. कौन सा सेक्शन होगा वो? 7 में डालो. 7 सेक्शन 7 करो, नहीं तो सेक्शन 6 ही करो और नीचे वाले को 7 करो. इसको 6 करो. नहीं 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 नहीं, इसको 6 को चेंज मत करो, इसको ऑलरेडी डिफाइन किया है हम लोग. सेक्शन 7 नीचे डालो, उसके नीचे डालो, सेक्शन 6 के नीचे डालो. सेक्शन 7 डालो और मिनिस्ट्रीज लिखो, उसका नाम स्टेट मिनिस्ट्रीज लिखो. ओ गौरव, नो इश्यूज. Roshan, we are defining new political system for the city. Ministries, the state will comprise of 3 ministries. लिखो, the state will comprise of 3 ministries. As comprise of 3 ministries. बाद में आप नीचे छोटा बुलेट कर सकता है, ए बी सी. ए में डालो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. बाद में उसको डिफाइन करो. Ministry of Finance will look after the budgetary allotments of the state, collection of taxes, increasing and reducing of taxes. क्या था वो एक बार Ministry of Finance? The Ministry of Finance will look after state expenditure, state budget. लिखो, look after the state budget. Will look after the state budget, financial, tax collection. Financial नहीं, tax collections. Tax collection, increase or decrease of taxes. And all financial related activities in the city, in the state. Financial related what? Financial related activities in the state.
ऑफ द स्टेट. ओके, नेक्स्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स. एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल, इंटरनल अफेयर्स. एक्सटर्नल क्यों? हम लोग दूसरों के सिटी में जाएंगे क्या अभी? एम्बेसडर भेजेंगे उधर. वो कर सकता है. वी कैन कीप अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड विल सेंड देम टू अदर सर्वर्स टू डू फ्रेंडशिप, डू टाई अप्स, गेट अदर आरपी प्लेयर्स हियर. वो भी कर सकता है. सो हमारा मिनिस्टर उधर जाएगा और उधर मीटिंग करेगा दूसरे सर्वर में, बोलेगा कि वी विल हैव सम इम्पोर्ट ऑफ सम आरपी प्लेयर्स ऑफ योर्स एंड विल एक्सपोर्ट सम रोल प्लेयर्स देयर एंड ऑल दोस थिंग्स. अच्छा होगा ना आरपी? या Ministry of Internal Affairs. The Ministry of Internal Affairs will look after all the law and order of the city. We'll also have law and order of the city. Okay. नहीं, we'll also निकालो. This ministry also will be looking after introducing new laws, introducing new bills, new legislations in laws. New laws ही लिखो. Look after getting new laws or amending existing laws in the city. The chief of police, state police नहीं, chief of police इधर. Chief of police will. अभी वो है ना, विक्रम सिंह राठौर है, थोड़ा इन सबको ओवरसी कर रहा है, कॉर्नर कर रहा है अभी. नहीं, वो राठौर का अवसर है. The chief of police will consult the ministry on any matters related to law and order, on all the matters related to law and order. Okay, next one, Minister of Health. द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वैसा ही सब EMS का उनके अंडर ही होता है, वैसा लिखो. उसका जॉब है नया लेजिस्लेशन और ये लाने के लिए इन द हेल्थ, लाइक इंश्योरेंस एंड ऑल दोज थिंग्स. Insurance covers, new insurance companies, health insurance, I mean, companies or whatever it is, and all those things. उसको डबल करो आप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही रखो, और एक मिनिस्ट्री, 4 मिनिस्ट्री रखेंगे. चौथा मिनिस्ट्री होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज रखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज. नहीं, छोड़ो, 3 ही मिनिस्ट्री रखो. रोड का कुछ नहीं होने वाला है, वो छोड़ो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग. 3 ही मिनिस्ट्री रखो. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ विल लुक आफ्टर द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सिटी. दिस मिनिस्ट्री विल बी लुकिंग आफ्टर न्यू लेजिस्लेशन और सब कुछ. एंड द EMS हाई कमांड हैज टू, सेम वे इनके चीफ है वैसा EMS हाई कमांड को उनसे जाके मिलना. तो इसमें क्या लिखो? द मिनिस्ट्री विल आल्सो बी लुकिंग आफ्टर द न्यू, after the health and welfare of the city. The ministry will be looking after new legislation in regard to the health, improving of health, or insurances, or health or insurance. 8 seconds, give me a minute. Yeah. अच्छा, और एक डॉक्यूमेंट है ना पीपी, उसमें स्टेट CM डॉक्यूमेंट. I have finance ministry defined. Okay, we'll see that.
ये डॉक्यूमेंट ना हम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे पीपी, क्योंकि ये वो डिफाइन करता है एरियाज को सब कुछ. वी विल यूज दिस नेक्स्ट टाइम. नाउ वी विल कीप शॉर्ट एंड स्वीट बिकॉज वी आर नॉट दिस वन. दैट डॉक्यूमेंट इज फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन विच वी आर थिंकिंग इन टेरिटरी वाइज. उसमें माइट बी देयर विल बी लाइक नाउ इट इज ओनली हाउ मेनी 4 people. इन दैट एटलीस्ट 10 people will be doing RP. So we'll keep it for that. Right now we'll define this only. ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि पहला हमको रोल प्लेयर्स मांगता है. ये आरपी करने के लिए रोल प्लेयर्स मांगता है. सो वी रिक्वायर एटलीस्ट सम रोल प्लेयर्स टू बिकम familiar. Yeah, the Ministry of Health will look after. 10 is too much. No, that is ministry will also will be increase the looking after server the slots that new time, right? The Ministry of Health will look after health and welfare of the city. This ministry will be looking after new legislation related to the EMS, related to hospitals. Related to EMS, EMS and hospitals. EMS, doctors and hospitals. This ministry also includes veterinary services. वो उतना मत लिखो, इधर ही लिखो. वेटरनरी सर्विसेज में इधर लिखो, डायरेक्टली लिखो हॉस्पिटल्स कॉमा एंड वेटरनरी सर्विसेज लिखो. डन. हम लोग और एक मिनिस्ट्री कर सकते हैं, वो है मिनिस्ट्री फॉर एंटरटेनमेंट. कर सकते हैं एंटरटेनमेंट एंड कल्चरल मिनिस्ट्री बना सकते हैं. जो मिनिस्ट्री सिटी में ऐसा कल्चरल इवेंट्स रखेगा, इवेंट्स करेगा, डिफरेंट ये करेगा, वो कर सकते हैं. वो नए इलेक्शन के लिए रखते हैं ना सर. हाँ, पर वो अभी नहीं बनता है, वो नेक्स्ट टाइम. 3 बस है अभी. अगर इस इलेक्शन में पता चल जाएगा कि ये 3 है, फिर 3 भी कम हो गए. हाँ, 3 तो 2 1 रखेगा, 1 रखेगा, तो उनके ऊपर है वो. Okay, so this is separate now. Just bring this down. This is a separate book. Okay, this is separate. That is separate book. मैं इसको कर दूंगा. Okay, chalo, done. So most of the things we have covered up. Might be some grammatic and all those changes might be required. Okay, that's it. But otherwise everything is perfect, I think. Just go through it Shrey once, everything. And try to check. आज से ये चैप्टर 1 हटा के या फिर चैप्टर 1 के अंदर ये कर देते हैं हम लोग. चीफ मिनिस्टर हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लीडर और ऑपोजिशन स्पीकर. ये कर दिया. चैप्टर 2 के अंदर पावर्स एंड ड्यूटीज, क्रिमिनल कन्विक्शन. हाँ, वो आप करो अभी. इन दोनों चीजों को डाल देते हैं. That you do now. How you have to compile it, you do that thing. Yeah, I'll do that. ये तभी मैंने जो स्टार्टिंग का ड्राफ्ट बनाया था, ये थोड़ा मैंने रियलिस्टिक ही बनाया था. अच्छा, तो सेक्शन ओनली याद रखो. सेक्शन 6 को जब कौन सा सेक्शन 6, वो फक मिस्टेक हुआ है. वो स्पीकर का सेक्शन 6 है, तो इसका सेक्शन 7 वो हट जाएगा. और एक याद रखो, वो सेक्शन क्रिमिनल कन्विक्शंस का हम लोग एक पैरा में यूज किया है उधर. तो अगर आप उधर का सेक्शन चेंज करेगा तो उधर भी वो पैराग्राफ, हाँ ये वाला पैराग्राफ है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पैराग्राफ प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पैराग्राफ. इसमें सब जगह पे जहाँ सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट वो चेंज करना पड़ेगा अगर आप सेक्शन क्रिमिनल सेक्शन का नंबर चेंज करेंगे तो. ओके, तो हो गया भाई. सेक्शन 6 बन गया ये. याद रखो. का सेक्शन 7 कर दिया, ये 8 कर दिया. नहीं तो इसको मैं वो चेंज कर दूंगा मैं आराम से. हाँ, वो बाद में करो आप. Highlighted one we have to check again. Yeah. 1 minute. We'll check the highlighted one. What we had actually, why they were highlighted yesterday. We'll check that. Okay, yeah. There was one highlighting thing. Negotiating contracts. What does this mean, Shrey? What was it written for? Represent the state in various official capacities such as attending meetings, events, negotiating contracts. ये गवर्नर के साथ contracts जो एक पीपी ने मुझे पहले बोला था. ये जितने भी legislations होगी चीफ मिनिस्टर बनाएगा, but that has to be approved by the state, right? By the governor. तो उस सेंस में मैंने लिखा था. We can remove it if you want to. क्या वापस in what negotiation contract means? These business houses and all those you mean? Yeah. No, you remove that. Business houses, they don't have anything to do with that. The management is dealing directly. So they don't have वो anything मुझे to do with लाइक this. जो मेरे को रॉ पता है, तो मैंने रॉ जो मुझे आइडिया दिया था उस हिसाब से लिखा था. नीचे वाला तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया था. Work with, एक क्या था? I took an Work with other inspiration local from- regional office to address issue and coordinate efforts. ये मैंने IRL थोड़ा लिया था इंस्पिरेशन. Like what you were trying to say in this?
लाइक एक छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट्स बना के टीपी ने बोला था कि मेरे जो दिमाग में था 5 जो हेड्स हो गए, 5 5 6 कम से कम होने चाहिए, क्या बोलते हैं आपके सब डेप्यूटी चीफ डेप्यूटी मेयर्स जो थे मेरे दिमाग में, जो डिपार्टमेंट्स हेड करेंगे, तो ये लोकल और रीजनल उनका हेड करके देख के बना सकते हैं। ले वो लाइक छोड़ो, वो फ्यूचर के निकालो। अंदर वी आर वर्किंग फॉर द पॉलिटिकल वाला ना, वो फ्यूचर बहुत में रियलिस्टिक हो गया था यहाँ पे, आई वेंट आउट ऑफ माय हेड ऑन दिस। फ्यूचर में रख सकते हो, अभी निकालो। हाँ, तो इसको भी स्ट्राइक कर दूं निकालने की जगह। हाँ स्ट्राइक ये करो, डोंट कीप इट इन दिस डॉक्यूमेंट, यू डोंट कीप। ओके, मेरे को पड़ा तो इसका दूसरा वाला, जस्ट कीप इट ओनली। Okay, so yeah, so only these two was yesterday a little bit this was. Yeah, guys, so most of it has been completed, so it's good. We have completed major headache in this already. Yeah, so done. और अभी सिर्फ बाकी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो डॉक्यूमेंट करना है। हाय सुमेश, हाउ आर यू? वही करना बाकी है, बाकी का हो गया। जस्ट गो थ्रू दिस एंड फिनिश इट ऑफ। Okay, chalo, I'm done now. Anything else you all want to talk, guys? You all, I'll just go off stream also now. So Shrey, it's done. You go with your this now. Finalize the document, okay? And then we'll have the management Yeah, I'll meeting do and it finish tonight it off. itself, and I'll some. So we are on अपने वाले date. में कोई We are या on फिर इस वाले date. कोई फाइनलाइज कर दूंगा। We are on date. So by 25th we can, by 25th or 28th we can just declare the election. This with the election commission appointed. So we can start. Oh yeah, that. we can just chapter की जगह मेंस कर देते, जैसे पहले वाला प्रिलिमिनरी है, इनको ही हटा देते। लेट्स कीप इट लाइक दैट, थोड़ा शफल अप कर दूंगा इसको, चैप्टर हटा ही देते फॉर नाउ, क्योंकि अभी जो ये ऊपर वाला जो है अपना लेजिस्लेटिव एक्ट है, ये अगले इलेक्शन था, आई गेस मोर थिंग्स विल बी एडेड। या बट ये मत लिखो, कुछ लिखा है वो कुछ मत लिखो। टाइटल चेंज करता है डिफरेंट है, पर लिखा जो एक्सप्लेन किया है वो मत निकालो कुछ भी। नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो चैप्टर 1 और प्रीलिमिनरी है ना, सेक्शन 1 के ऊपर और नीचे चीफ मिनिस्टर के ऊपर, रिमूव दैट एंड कीप इट लाइक दिस। इसको थोड़ा शफल अप कर दूंगा, जो डेफिनेशन होगी वो ऊपर, एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड द कन्विक्शन ये सब नीचे नीचे कर दूंगा। हाँ, वो आप ऊपर नीचे अच्छा, करने अच्छा। का ओके, इवन टाइटल चेंज करता है तो ओके, पर जो लिखा है ना ब्रैकेट अंदर पैराग्राफ्स वो बनाए ना change नहीं वो होगा, मत निकालो। कंटेंट चेंज नहीं होगा, कंटेंट वो चेंज वैसा नहीं ही होगा, रखो। डोंट वरी अबाउट दैट। या ओके चलो, आई विल सी यू 1 मिनट। ओके गाइस, आज का स्ट्रीम वी हैव डन दिस, सो टुमारो आई माइट नॉट स्ट्रीम, but I will stream directly on might be Tuesday or Wednesday, possibly Wednesday I'll stream, guys, and that day we'll do the model code of conduct and finish it off. We'll try to enter the RP also for some time to do anything it's possible. Otherwise Wednesday my vehicle also is coming, guys. I'll show my vehicle, so I'll meet you all on Wednesday. So you guys take care. It was great that we had a well understanding to make this document well. Hopefully this RP will be well going in the server and अच्छा होगा. It will be all the side good for everyone. People will enjoy it. So I will see you all soon, guys. Take care. Love you all and be safe. Okay guys, bye. I'll see you all later. Bye.